who are already benefiting by it. Okay, तो आप ऐसा अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये बहुत डिफिकल्ट है और ये आसान नहीं होने वाला है. आपने आज तक दवाइयां खाई हैं, पेन झेला है, उससे बहुत ज्यादा इजी है कि आप अपने शरीर पे काम करें. हैंड होल्डिंग हम करेंगे. Okay, so how many of us are interested to know what are the natural methods through which we can come out of our current problems? कितने लोग जानने के लिए उत्सुक हैं? Vichar Bindu sir gives his thumbs up. What about the rest? Okay, so can I have 2 minutes of your screen time so that I can share certain aspects of Ashtang Chikitsa? Okay, so 2 minutes. Can you see the screen? Yes. So Ashtang Chikitsa online therapy for neuromusculoskeletal problems. So namaste, I welcome you all to the Ashtang Chikitsa webinar. My name is Rachna Bothra and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. In today's webinar, we will present to you a unique therapy for curing neuromusculoskeletal problems that you or someone in your family may be suffering from, but have not yet found permanent relief despite spending a good amount of money on various treatments. So Ashtang Chikitsa, how does Ashtang Chikitsa work? It works on the internal organs and it can be used also as a preventive. We've all heard of the saying, prevention is always better than cure. एक बीमारी जब आपको लग जाती है तो उससे निकलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ना कि हम उसका प्रिकॉशन पहले से ही लें and work on our body as a prevention so that in our aging process, we do not come across these problems. So now I'd like to introduce you all to Swami Rajvibhuji, a rare Kumbhak yogi. Swami Rajvibhuji has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of using allopathic medicine, not only in India, but Europe and the US as well. So he has taken people out of chronic diseases like thyroid, BP, heart, diabetes, and even life-threatening diseases like cancer. So सब लोग उत्सुकता से जानना चाहते हैं ये कैसे होता है, right? So at Avisa Healing and Fitness, we are reviving Ashtang Chikitsa to address the structural issues of a human being. So when we say structure of the human body, the musculoskeletal system is one of them. So how the structure of the human body can function in its best possible way, that's our purpose at Avisa Healing and Fitness, a profound way of addressing the aspects of a human body. अब हम आते हैं कि ये वेबिनार आखिर है किसके लिए? Who is this webinar for? For people who are tired of temporary treatments and are looking for a natural and permanent solution. For people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their health issues. So reversing neuromusculoskeletal problems with Ashtang Chikitsa, freedom from pain and medication. So Swami ji will talk about the 8 Sharir in detail. अभी मैं आपको सिर्फ बताऊंगी कि 8 सॉफ्टवेयर जो हमारे शरीर में होता है वो क्या है. सो सृष्टि शरीर, गर्भ शरीर, दोष शरीर, मर्म शरीर, प्रमाण शरीर, संख्य शरीर, प्रकृति and the vikriti शरीर. So now we come to the last 2 parts of the prakriti and the vikriti sharir. So prakriti, as the name sounds, natural, जो
रीजेनरेशन फैक्टर होता है हमारे बॉडी में, दैट इज द प्रकृति शरीर। विकृति यानी कि बिगड़ गया, या फिर डीजेनरेशन फैक्टर ऑफ द बॉडी विच इज वेरी नॉर्मल फॉर ऑल ऑफ अस एज वी एज। तो जब इसमें इम्बैलेंसेस होता है बिटवीन द रीजेनरेशन फैक्टर एंड द डीजेनरेशन फैक्टर, problems surfaces, especially for women post 50 as they enter menopause. They come up with a lot of joint pain. So reason being कि उनका degeneration is going at a fast pace and the regeneration is quite slow. So अष्टांग चिकित्सा में हम किन डिजीज को हील करते हैं? Of course the list goes on and on, क्योंकि बीमारी की तो कोई कमी है ही नहीं। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स है जिसको हम लोग एड्रेस करते हैं। तो दैट इज नी पेन, लोअर बैक पेन, हिप इश्यूज, पेन इन द लेग, ड्रॉप फुट, स्पाइन रिलेटेड इश्यूज, स्लिप डिस्क, डिस्क बल्ज, वीक स्पाइन, स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, ड्रूपिंग शोल्डर, टेनिस एल्बो, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, osteoporosis, dislocation, neuropathy, or the nerve issue. So let's hear from Swami Raj Vibhu ji, वो क्या बताते हैं हमें कि हम कैसे अपने करंट प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, उसके बारे में वो आपको बताएं। Thank you for listening to me patiently. Abhi, I will just tell you how we're going to proceed in the webinar. You will be listening to the recorded session of Swami Raj Vibhu ji as to how to come out of your current problems. What exactly do we teach you at the webinar? All that you will get to know. Uske baad we will bring in a live testimony or somebody who has been attending the Ashtang Chikitsa classes और उनको कैसे बेनिफिट हुआ है इन क्लासेस से। उसके बाद हम लोग शेयर करेंगे प्रोग्राम डिटेल्स, एंड देन यू कैन राइट योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स अलोंग विद द नंबर, और जो भी आपके क्वेश्चंस है आप क्लास ग्रुप में भी लिख सकते हैं। वी विल डेफिनेटली आंसर दिस। थैंक यू सो मच। नमस्ते। ओवर टू अनिल जी टू शेयर द प्रोग्राम डिटेल्स। So let's start. Neuromusculoskeletal problem. We are talking about neuromusculoskeletal problem. आपके शरीर में हड्डियों का, मांसपेशियों का और नसों का जो गठजोड़ होता है, they actually create every movement in your body. आपके शरीर में वही movement create करना है. So I'll take one example and let's go ahead understanding why problem happens and what is the solution. मैं एक एग्जांपल से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे। So suppose what is the most common problem at this point of time? सबसे common problem क्या है आज के समय? knee pain. Let's take knee pain as an example and understand what we are talking about. हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में knee pain से start करते हैं, right? So some person who got an injury in one of the knees will get a knee problem in that leg. है कि नहीं? अगर एक नी इंजरी किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी। और स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज समहाउ डैमेज्ड वन नी, एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी। बट दैट इज लोकलाइज्ड प्रॉब्लम। Does everybody has damaged their knees? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया? No. People are still getting into problem. Then when you go to the doctor with your knee problem, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके, and the most common thing that you hear is degeneration in the joint. जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वो तो आपके घुटने घिस गए हैं, isn't it? Degeneration. So the next thing can be degeneration. यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है, वो प्रॉपरली बन नहीं रहा, उसको बनना भी चाहिए था, रीजनरेशन भी होना चाहिए। रीजनरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन सिस्टम, बट रीजनरेशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली, डीजनरेशन इज हैपनिंग। दूसरा कारण हो गया, नाउ सम पर्सन
goes to a doctor with a swollen knee, inflammation in the knee, लालीपना है उसके घुटने में, inflammation है, सूजन है, the doctor will still say there is a localized problem at the knee. वो कहेगा एक्सरे करा लो, वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो, एंड ही वुड ट्राई टू सी द प्रॉब्लम देयर इटसेल्फ. वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा. बट डू यू नो व्हाई इन्फ्लेमेशन हैपन इन योर बॉडी? व्हाई इन्फ्लेमेशन क्यों होता है? सूजन क्यों आ जाती है आपके जोड़ों पे? शायद आपका लिवर ठीक नहीं है. If your liver gets impacted, there will be inflammation in the body. If your digestion is not proper, there will be inflammation in the body. Third thing, if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So, क्या इसका reason ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So, even if you go for a liver test, liver will not show any sign of damage till it gets damaged to 95%. 95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला. So your problem will remain undiagnosed. Usually these diagnoses are not done. तो इन्फ्लेमेशन क्यों है? यहां पे आपके जॉइंट में प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिवर प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज अ किडनी प्रॉब्लम, because there is an issue with digestion. Now, Rachana ji said after menopause, osteoporosis, osteoarthritis is very common. Yes. What does it mean also? आपका घुटना का दर्द क्या रीजन क्या हो सकता है? Hormone imbalance, isn't it? Another reason is hormone imbalance. हार्मोन इम्बैलेंस होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा, लोअर बैक पेन एंड योर नी पेन कैन हैपन. So what are you doing to balance your hormones? There is no way. कोई तरीका नहीं है. Now if the osteoporosis has happened, हड्डियां अगर ब्रिटल हो गई, कमजोर हो गई हैं, पोरस हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर. If they have become brittle by calcium, how many people have come out of osteoporosis by taking calcium? Not even a single example. एक भी एग्जाम्पल नहीं है. Rather, do you know if you take long-term calcium, the chances of breast cancer will increase by 200%. So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or some kind of a breakdown at a localized position. The discrepancy at a localized position is not the only way to look at a problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors, 8 कारण हैं because of which one problem happens, जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem, then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा. This is Ashtang Chikitsa. Now in the last 50 years, पिछले 50 साल 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. ज्यादा से ज्यादा to the extreme, what the doctor will say, do a knee replacement. अपने घुटने बदलवा लीजिए. So what does it mean? It cannot be treated. According to the modern treatment, it cannot be treated. ये ठीक हो ही नहीं सकता. So I would tell you to remember your grandfather, grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें जरा. क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? Did they have problem at this age? No. So why deterioration or the problem was not happening at that time to this scale? इस स्केल में उस समय प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी. आज क्यों हो रही है? Because the system has gone weak and we are not doing anything on this human body to strengthen it. इसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. So let's start Ashtang Chikitsa. The first thing, when I'm talking about Sharira, the word Sharira means body and mind both. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर, तो इसका मतलब body as well as mind. Because in
in Kumbhak Paddhati, in Kumbhak Kalachar or Ayurved Kalachar, in Yoga Kalachar, there is nothing called as mind separately. It's always Sharira. Both body and mind complex is called as Sharira. मैं एक एग्जांपल दूं आपको. लेट्स टेक एग्जांपल. ओपन योर माउथ एंड ट्राई टू थिंक. अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए. ओपन योर माउथ एंड ट्राई टू थिंक. Oh, it becomes difficult. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा. And just a little bit, if you know how it works, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं. You just catch it then and there. तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे. So is your action and your mind different? Is your body and mind different? No, it is not different. ये अलग नहीं. So your body and mind complex constantly strives to live. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के. हाँ या ना? So there is something called as प्रकृति, new cellular formation. नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं. And there is another aspect called vikriti. Lot of cells which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यू जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं. After a certain time period, certain age, they wear off. This is wearing off is called as vikriti and production is called as prakriti. Right? ये दो चीज हमेशा चल रही है. There has to be a balance of these two things, manufacturing and release. ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए. Now, I'm giving you another example. We will take examples so that you understand what I'm saying. बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं. ये these are things you know already, but you are not paying attention to your body. आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका. So when there is a polluted area, you enter a polluted area. एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं. If you watch your breath, अगर अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पे, what happens more, inhalation or exhalation? जरा सोचिए, please think about it because your body is the primary responsibility. क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं, ज्यादा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ज्यादा छोड़ते हैं. आप लेना नहीं चाहते हो. Your body doesn't want to. अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है. You don't take in, you try to exhale more. If you get tired, अगर आप थक जाते हैं, what is tiredness? थकना क्या हुआ? Lot of toxins in the body, isn't it? What do? You do long exhalation. This is what you do. You do long exhalation, less inhalation. Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर holiday के लिए आप hill station में गए, what happens more, inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही सिचुएशन मिलती है, if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more. आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, more exhalation. So how is your environment, nearby environment? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया है? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी ह्यूमैनिटी. I'm just talking about humanity. I'm just saying it in that way. हमने क्या किया वातावरण का? खराब कर दिया. Do you think your body wants to inhale more or exhale more? It wants to inhale less and exhale more. So is construction happening more or destruction happening more? Lot of destruction, no construction. So आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बंद तो रहे नहीं, आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी. What kind of food you are eating? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? Genetically modified food, isn't it? Your body doesn't want to take it. लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है. Your body pukes it out also sometimes. वो बाहर निकालना चाहता है. It doesn't want to take in. So regeneration will happen more or degeneration will happen more? Degeneration will happen more and correlated with the situation. इसीलिए आपके
जॉइंट्स घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है, रीजनरेशन नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं. सो देयर इज एन इम्बैलेंस ऑफ प्रकृति एंड विकृति. इसका बैलेंस होना चाहिए था, मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है. सो ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, देयर इज नो चांस ऑफ रिकवरी. So what are you doing to create a balance of these two things? You are not doing anything. तो आप ना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? First of all, so this is the first thing that we need to get to: a balance of prakriti and vikriti, a balance of regeneration and degeneration, and there is a method to do it. इसका एक तरीका है करने का. अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, what do you do? Somebody is hitting you, कोई आपको मार रहा है, you feel damage ना, you think there will be a damage. What do? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को. You hold your breath and tense your body, isn't it? Yes or no? आप जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है. Whatever I am saying, you know it already. तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना. अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, if you are watching a horror movie, there are certain scenes that you don't want to watch. देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पे. एक बच्चे को देखो, see a kid, the kid will close the eyes. So you hold your senses also to protect yourself. अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस. You hold your breath. If there is a bad sound, you close your ears. आप नहीं सुनना चाहते इसको. You hold your senses. So holding your breath, holding your senses is called as कुंभक. इसको नाम दे रहे हैं हम. So it is not just breath hold, it is the hold of senses also. आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, all the 5 senses, you hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti. देखिए आप degeneration stop नहीं कर सकते. This is a natural process of life. You will age, but you must age gracefully. ठीक है? तो how to balance vikriti? There is a method to balance vikriti. Ashtanga Chikitsa will give you that method to enhance prakriti and balance the vikriti. So then next thing, when there is a regeneration, कोई नई चीज पैदा हो रही है, so it will expand, isn't it? वो फैलेगा. एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है. There is a little infant which gets born, and then the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya. The real word for expansion is samkhya, or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion. सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार. Suppose your one hand becomes long, the other hand remains short. एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया. Will you get joint problem in one of the shoulders? आपको एक शोल्डर में joint problem आएगी ना? So if you have one leg a little longer than the other leg, एक पांव ज्यादा लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, so you'll get knee pain in one leg. आपके एक पांव में knee pain होगा. You'll get hip pain at one side of the hip. If your body is not aligned, the right side and the left side is not aligned, you will get a problem. Neuromusculoskeletal problem. अगर आपकी एक muscles खिंच गए because of uneven expansion, skin ढीली हो जाती है ना, skin becomes flabby when there is an uneven expansion. You get stretch marks, isn't it? You know what is stretch mark? You get stretch mark because there is an uneven expansion. असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है. एट मसल्स, एट जॉइंट्स, आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है, मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना, वहां पे. सो डिसअलाइनमेंट, if you see at this point of time, most of the people do not even walk straight. The way we are sitting, the way we are living our life, we don't even sit straight. कितने लोग सीधा बैठते हैं? You always take a back rest, isn't it?
So there will be, if you don't use your body proportionately, there will be disalignment. और आपकी जॉइंट प्रॉब्लम डिसअलाइनमेंट की वजह से भी हो सकती है. देयर आर थ्री बेसिक डिसअलाइनमेंट दैट हैपेंस इन द बॉडी. तीन बेसिक डिसअलाइनमेंट है. नाभि, योर नेवल कैन गेट डिसअलाइंड, वी कॉल इट धरण. योर चेस्ट कैन गेट डिसअलाइंड, आपकी छाती डिसअलाइन हो सकती है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज कौड़ी. एंड योर लेग्स कैन गेट डिसअलाइंड, आपके जांघें डिसअलाइन हो सकती है. That is called as nale in the local terminology. Nabhi, kaudi, nale. Now, if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. आजकल diabetes बहुत हो रहा ना? आजकल diabetes बहुत हो रहा. Do you know one of the reason of diabetes is disalignment of the navel? But nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, Corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of Cowdy or the chest factor, and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem, ankle problem, sciatica, those kind of things. So what are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक काम करें, लेट्स सी हाउ डू वी बैलेंस. हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा. अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, होल्ड योर राइट हैंड ओवर द टॉप एंड ट्राई टू पुल इट. खींचने की कोशिश करें, जस्ट पुल ऑन द लेफ्ट साइड, बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें. व्हेन यू पुल, व्हाट यू डू, ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ, यस और नो. सांस रोकी आपने. इवन इफ यू हैव टू अलाइन योर सेल्फ, what is the basic key? वो कुंजी क्या है, वो चाबी क्या है? It is kumbhak. It is holding your breath. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body. That is what we teach in Ashtanga Chikitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you will feel very light. आपको हल्का महसूस होगा. You lose excess of weight. जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है, वो आपका ठीक हो जाएगा. So Sankhya Sharir, this is the second factor. Now again, if you have to align or Sankhya, if you have to correct the Sankhya, you have to use Kumbhak. Now let's go to the third part, Pramana. Now one more thing in Sankhya, what I want to actually tell you, that there is a way of doing a movement and holding the breath. अगर आपको तरीका पता है ना, how to align, how you want to align your navel, how you want to align, how you can align your chest, अगर ये तरीका पता है ना, then only you will be able to align. So it needs a little commitment. एक थोड़ा committed atmosphere चाहिए होता है उसके लिए. That is why we teach it in the class. हम क्लास में सिखाते हैं. Now the fourth aspect, प्रमाण शरीर, प्रकृति, विकृति, संख्या, प्रमाण. चौथे पे आ गए हम, प्रमाण. प्रमाण मीन्स डेंसिटी. इसका मतलब होता है डेंसिटी, गुरुत्व, भार. डेंसिटी, इसी को धातु भी कहते हैं. वी कॉल इट धातु. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू इन योर बॉडी, इजंट इट? आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कोशिकाएं हैं. लाइक बोन इज वेरी मच डेंस. हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है. योर मसल्स इज लेस डेंसर देन योर बोन. आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें. और आपके फैट में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, योर फैट मसल, वो योर फैट टिश्यू और एडिपोज टिश्यू इज वेरी लाइट कंपेयर टू द मसल्स एंड बोन्स. जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है. पीपल हु हैव डेंसर बोन्स एंड मसल्स, देयर वेट इज हाई इवन दो दे आर लीन. वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है. So there are different kinds of tissues. This is called as Sapt Dhatu. 7 different density टिश्यू की है आपके शरीर में. There are 7 different densities, tissue of different densities. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. These are 7 densities. ये अलग अलग भार के टिश्यूज हैं. If the densities becomes less, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी organs हैं, हार्ट, लिवर, lungs, kidney,
ये जितने भी ऑर्गन्स है ना, इनको काम करने के लिए देयर इज अ डेंसिटी रिक्वायर्ड. सो वी आर लूजिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ आवर ऑर्गन. हमारी ऑर्गन वीक हो रही है. व्हाट इज डायबिटीज? योर पैनक्रियाज इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, योर लिवर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. व्हाट इज हाइपोथायराइड? योर थायराइड ग्लैंड इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, है ना. इट हैज ऑल्सो रिलेशन विथ लिवर. व्हाट इज किडनी डिजीज? योर किडनी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. ऑर्गन डैमेज आजकल ज्यादा है. यू विल सी मोर क्रॉनिक डिजीज आर देयर, है ना, ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज. सो हाउ डू यू करेक्ट योर ऑर्गन? सपोज देयर इज अ जॉइंट पेन ड्यू टू लिवर डिसफंक्शन. लिवर के कारण आपके शरीर में जॉइंट पेन है, इन्फ्लेमेशन. सो यू विल हैव टू करेक्ट द लिवर. आपको लिवर ठीक करना पड़ेगा. इज देयर अ मेडिसिन टू करेक्ट लिवर? नो, देयर इज नो मेडिसिन टू रिजुवेनेट योर ऑर्गन. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को. देयर इज नो मेडिसिन. देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन. दवाई हो ही नहीं सकती है. सो यू विल हैव टू वर्क इंटरनली. आपको अंदर काम करना पड़ेगा. अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं. यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन डू वेट ट्रेनिंग, इजंट इट? But people into sports and weight training and exercise, they also get diabetes, they also get heart attack. 40-40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है. एक्सरसाइज कैन नॉट रिजुवेनेट योर ऑर्गन. एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला. सो हाउ विल इट हैपन? ये होगा कैसे? शुड वी डू ए लिटिल एक्सपेरिमेंट? एक एक्सपेरिमेंट करें. नाउ कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस. अपने बाएं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से. Make a fist from the right hand. Keep your left palm like this and try to push your left palm very hard. जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को. पुश कीजिए, जोर से पुश कीजिए. How do you create this strength of pushing? ये जो शक्ति आप क्रिएट करेंगे, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? You are holding your breath. You are holding your breath behind. करके देखिए दोबारा. Again, do it. Do it again. See, push it hard. You hold your breath. सांस रोकते हैं आप. बट सांस रोक के by holding the breath, where are you creating the trigger? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? Here, यहां पे कर रहे हैं एफर्ट, बाहर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना. यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. बाय होल्डिंग योर ब्रेथ यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. सो व्हेन यू लिफ्ट समथिंग, कोई भार आप उठाते हैं, so how do you lift weight? वेट कैसे लिफ्ट करते हैं? You hold your breath. You can't lift weight without holding your breath. You hold your breath and when you lift weight with the right hand, suppose कीजिए आप दाएं हाथ से वेट उठा रहे हैं, the trigger goes to the right hand muscles. दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है and this becomes strong. Your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होता है ना. This is how weight training and body building happens, isn't it? So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen? आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं. क्या होगा? What will happen? You are not creating an external trigger. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे इसको. तो कहां जाएगा ये? डायरेक्शन कहां जाएगा? Internally, your heart rate will increase. आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी शरीर. You start sweating after some time. पसीना आ जाएगा. Where did the trigger go? Inside. So by breath hold, you can create an internal trigger. Can you direct it towards your heart, towards your liver, towards your kidney, towards your thyroid, towards the other organ and make it strong? इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए. How you made one hand more stronger than the other? एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? Because you worked with that hand more, isn't it? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. And how did you work? Breath hold and direction. Breath hold and direction. That hand became strong. So if you do breath hold and direction inside, that organ will become strong. This is the only way. There is no other way. So how you can rejuvenate your liver? How you can make your liver strong? How you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtanga Chikitsa. So how do you correct the Pramana Sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है?
तो और दूसरा तरीका, देयर इज नो मेडिसिन फॉर दैट, कोई दवाई नहीं है उसके लिए, एंड देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन, कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you, for youngsters also, छोटे बच्चों के भी organ weak हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside and rejuvenate your organ, make your organ strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? आपका heart, आपके muscles, your nervous system, muscles, bones, they all work together. If you take out heart, you will not be able to move. You will not be able to live. If you take out liver, you will not be able to live. So they all work together. So there are junctions. ऐसी जगह है जहां पे की movement होती है. There are junctions. Muscle and nerve junction. Muscle and bone junction. Two bones and there is a junction. ऐसा ही है ना? दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. Organ, आपकी आंतों के बीच में. Lungs, organs and the external body is connected. ये सब जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो junction point है, this junction point of the various organs is called as marma. If this junction point is okay, lubricated and flexible, you can perform better. अगर ये junction point ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से movement कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक movement ठीक से होगा. Your organ function will happen properly. So these are called marmas. So marma needs a constant rejuvenation. इनको constantly एक तरीके से movement देना पड़ता है. To keep it fine, we need to actually make them move in a particular way constantly. For example, I'm giving another example. If your marmas are not functioning properly, there are two kinds of circulatory movement in your body. आपके शरीर में दो तरीके का movement होता है, blood circulation and lymph circulation. ऐसे मान के चलिए, just think about it, there are tissues and cells. आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना waste छोड़ देते हैं. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints और lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे कटकाते हैं तो आवाज आती है ना? If you just tense the joints, there will be a sound. टक से आवाज आएगी ना? क्या हुआ? Gases release हुई. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. वो बिना movement के नहीं होगा. Blood circulation can happen without movement because there is a pumping organ. एक heart है जो blood circulation करवा रहा है. Lymph का कोई circulation नहीं करवा रहा. It will only happen by movement of the body. So if you move the body in a particular way, these toxins, they go out of the body. There is a constant rejuvenation of cells. Internal environment साफ बनेगा आपका, तभी there will be प्रकृति, new cellular form, better cellular formation. अगर वो environment ठीक नहीं होगा, तो wrong cellular formation called, and this is called as cancer. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. So because of an internal environment, cancer happens because of a cancerous environment. और उसके लिए, if you want to come out of that, then there should be constant rejuvenation of marma. तो इसमें हम marma ashtanga chikitsa में, there is a part in ashtanga chikitsa, there is a part called as anganyasa and marma vinyasa, which actually works upon, there is a particular movement in a particular way with a particular kind of breathing. It's a part of ashtanga chikitsa. Now go a little further. Now everything is ready for functioning. Now tissues, organ, joint, marma, सब कुछ तैयार हो गया. Now you function, you live your life, you do movement, you do function. काम होता है ना. So function, there are three things which are attached to function. तीन चीजें हैं function के साथ में जुड़ी. Material, energy and movement. Function means three things: material, energy and dynamism. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. This you must have heard of. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी. So everybody is educated.
You know, at least you must have heard of this word called Vata Pitta Kapha. Most of the people do not know what it is. They try to make an idea, but material, energy, and dynamism, Kapha, Pitta, Vata. Most of the problem is attributed to dynamism. वात दोष ज्यादातर प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है. So what is your joint problem? What is it called as? वात दोष. Right? मूवमेंट को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? What is vata? Movement. Vata also creates pain. So movement, how do you control movement? If you want to move your hand, how do you control the movement? अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाए, देखिए पीछे, अपने पीछे देखिए. How do you control this movement? By holding your breath in a particular manner. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए. Yes or no? You control your movement by holding your breath. Without holding your breath, you cannot control your movement. So वात दोष से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of Vata dosh, what you need to do is control your movement. कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, उससे क्या होगा? Temporary, you'll get a joint pain relief. Temporary, it will temporary. क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा? No, it will not happen. So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice कुंभक. कोई और चारा है नहीं. So दोष शरीर को, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak. Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do Vata Pitta Kapha balance, but to a certain extent. केवल एक extent तक ही कर सकते हैं. They can be a little help, but they cannot be cure, rejuvenation. If you do kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So neuro problem, usually कहते हैं neuro problem. Somebody was talking about so what people were talking about? Spondylitis and what else? Neuro problem. Now something called as drop foot, neuropathy, है ना? ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things. So neuropathy happens on, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem. There is degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't. No, there is no solution for that. There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, for which there is no solution. कोई solution है ही नहीं. So I'll tell you some examples. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. So there was a person who was suffering from paralysis. एक 65-year-old professor of Delhi University or some associate Delhi University का कोई college है उसमें. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There is a marathon runner. She's a lady, एक lady marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, उसका marathon सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place. She started doing kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पलकती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started kumbhak, and in 3 months' time,
he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85% it's gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words, he was not able to speak. Uska voice box related issue tha. It is also a neuro origin. So he started Kumbhak in 4 to 5 months time. He said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूं जो पहले नहीं बोल सकता था. So these are examples of people who have done Kumbhak and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis, and neuropathy. You can actually revive, your whole nervous system can revive. Let's get to the second last part or the seventh Sharira. It is called as Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. So we will be just, there has been some network issue. Kindly bear with us. Thank you so much for bearing with us. Just a minute, Just 2 minutes. the video got disconnected. Yes, the video got disconnected. There was some network issue. So Anilji, you will be sharing the screen for the later part of the. Yeah, just a second. Yes. The audio is not happening. यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज है उसमें. Yes, now it's audible. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing Kumbhak. In 3 months time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There is a marathon runner. She's a lady, एक lady marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, उसका marathon सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place. She started doing Kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पड़कती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started Kumbhak, and in 3 months time, he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85% it's gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words, he was not able to speak. Uska voice box related issue tha. It is also a neuro origin. So he started Kumbhak in 4 to 5 months time. He said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूं जो पहले नहीं बोल सकता था. So these are examples of people who have done Kumbhak and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis, and neuropathy. You can actually revive, your whole nervous system can revive. Let's get to the
second last part or the seventh Sharira, it is called as Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way of creating quality. So Garbha means quality. Garbha, quality or genetics are correlated. I'm talking genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body. How much your body has potential in what direction, in what vertical. It is your genetics. Isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma. When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now, the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics, changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now now been busted. So now you can change your genetics also. Now, if the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I am telling you, Kumbhak is a way to change genetics. When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics. And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure. Whatever genetics you say or what is being said in the world today can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Shrishti Sharira. Eighth Sharira is Shrishti Sharira. Shrishti means what? In which you are sunk. Like Shrishti for a fish is the sea. एक मछली के लिए समुद्र सृष्टि है. So the water around her is सृष्टि for her. So for human being, the cosmos, ये ब्रह्मांड is सृष्टि. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. Atmosphere का pressure है ना आपके ऊपर. उसके बावजूद भी आप move करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? Gravity तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है. आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no? आप जोर लगा रहे होंगे gravity के विरुद्ध. आप जानते भी नहीं हैं. You don't even know, notice. But you are applying a force opposite to gravity. Suppose कीजिए, आपके अंदर this force becomes weak inside you. Gravity के opposite force लगाना कमजोर हो गया. आपको कैसा feel होगा? How will you feel in your body and mind? You will feel heavy, pulled by gravity. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. Will not feel light. How will you feel? Heavy. ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे heavy feel करेंगे. Where will the heaviness impact? ये heaviness कहां असर करेगा आपके? Joint पे? It will impact the joint? Yes or no?
This heaviness is called as stress, S-T-R-E-S-S. You talk about stress, but आपको मालूम नहीं है stress क्या है. You think situation creates stress. No. Put 10 people in the same situation. 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle a situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें स्ट्रेस होगा. So are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So I talked about one force. एक फोर्स के बारे में बात किया. The upward force is called उदाना. In कुंभक कलाचार, in कुंभक विज्ञान, we call it उदाना. इसको हम उदान कहते हैं. Have you heard of this word उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने? उड़ना, उड़ान. This has come from the root उदाना. That means opposite to gravity force. There are 84 forces which you are struggling every moment through. 84 अलग-अलग forces में आप काम करते हैं. Your organs function according to these forces. So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा फोर्स वीक हो गया जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ गए? That is what we diagnose in प्राण शक्ति diagnosis. यही प्राण शक्ति diagnosis है. We find out the force which has become weak in you, and because of that you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do prana shakti diagnosis, and in the 9 weeks you learn the basic module, and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 हफ्ते तक आप एक मॉड्यूल सीखते हैं. There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है. 3 चीजें हैं. The first one is called as अंगन्यास. The second one is called as hatha vinyasa. The third one is called as kumbhak therapy. So in 9 weeks you learn this module of 3 steps, and then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtanga Chikitsa. So it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex. Prakriti, Vikriti, Sankhya, Pramana, Marma, Dosha, Garbha, Srishti. And it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you will not get a magic pill. कोई ये मैजिक दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go? ये common sense कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं? That is why more medicine, more disease in the last 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this. Body is magical. Let me give you this guarantee. ये शरीर बहुत मैजिकल है. ये ठीक करता है अपने आप को. This is the only gadget which is self-corrective or it corrects itself. ये खुद को ठीक करता है. आप मौका दें इसको. You empower your system and you'll see magic happening in your life. So it is important. Wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में, कितनी बढ़ गई? वो आपको रूल करने लग गए. आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए. जस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड you'll see your health will improve. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. So the team will take you forward. Team आपको आगे बताएंगे.
Thank you so much for listening to Swamiji patiently. I would like to now invite Shruti ma'am to share with us her journey of Ashtanga Chikitsa. Shruti ma'am, are you able to hear me? Shruti ma'am? Yeah, I can hear. Yeah, I can hear you. Thank you so much, Shruti ma'am, for joining us today evening. Just 2 minutes, I will put you on spotlight. Yeah. Yes, 2 minutes. She's on spot. Okay, so you can share your journey. Yeah, I joined Ashtanga Chikitsa on 15th August 2022. I had severe problem of my knee. I could not fold my knee, nor I could sit. I was getting cramps in my legs in the night when I would sleep, and I had to just get up in the middle of the night, like, because it was unbearable. And morning when I would get up, my whole body would hurt me so badly, like, I would not, my fingers would be like, I felt like it's swollen. I took almost 15-20 minutes, by just massaging, rubbing my hands, legs, and also that I could get up. This was my condition. And the pain had become a part of my life, where I accepted it and I thought that I have to live with it. I refused to take any sort of medicines, like, I never went to the doctor. I went twice to show it to my doctor, but he said that I had to go for the knee surgery and all, which I refused to do that. I kept on doing my thing, whatever stretches and all, till I came across Ashtanga Chikitsa. I started the kriyas, which I was told to do regularly, religiously. I started initially by sitting on the bed and do it, because I could not sit on the floor at all. But after a week's time of whatever I was told to do, I decided to sit on the floor, and I realized that I could sit, though it was a little bit uncomfortable, but I still managed. But as days passed by, I am completely sitting on the floor now, and I find it very comfortable. I don't have to keep moving my knees or legs, straighten out, nothing. My pain has completely disappeared, and when I get up immediately. It's not like I have aches, which I used to have earlier on my shoulders, neck areas, and everywhere. I don't have it now, and my body feels very light. I feel very peaceful. I'm enjoying every part of the kriya that I'm doing, and in fact I look forward to 3:30, because I get up 3:30 in the morning to do the kriyas, because that's the time when I find it very peaceful. I'm very grateful to the Visa team, to the mentors, and especially to Swamiji, to bringing out this wonderful tool to us. So thank you so much, Avisa team. Thank you so much, Shruti ma'am, for sharing your journey of Ashtanga Chikitsa. Now I would like to ask Anilji to please share. Geeta ma'am has just joined in, so we'll just take a quick word from Geeta ma'am about her journey of Ashtanga Chikitsa, and then Anilji would be sharing the program details. Geeta ma'am, am I audible? Yes. Can you hear me? Thank you, ma'am. Yes. Thank you, ma'am, for joining us. Yeah. Now, I want to tell my experience about joining Ashtanga Chikitsa. I had severe pain. I used to have severe back pain, sciatica, and there was a time when I couldn't even stand up or walk. I used to find every time I sat down for some time, every time I got up, I used to have great difficulty in standing. Till one fine day, I just going through Facebook and I saw this advertisement of Ashtanga Chikitsa. I saw the reviews and I was very satisfied. So I joined this on the 30th of August. And within 2 sessions, I was surprised to find that my pain had completely disappeared. I was so happy, because I thought I would never be able to walk again and I will never be able to get well. Just like Shruti ma'am, I thought even the pain was a part of my life now. And then I
I had spent a lot of money on doctors and had removed X-rays, and all the doctors told me, you know, this is a part of your life and you're never going to be, you just have to do exercises and all. And I consider this joining Ashtanga Chikitsa a miracle. It's really a miracle because today I'm absolutely energetic. I can walk, I can go everywhere, I can bend, I can do each and every exercises of what Swamiji has taught me. And I'm really happy to and thank everyone at Ashtanga Chikitsa for this great miracle for myself. And I'm very happy and I wish to continue this further. Thank you. Thank you so much, Geeta ma'am, for sharing with us your journey of Ashtanga Chikitsa. Now I would like to ask Anilji to please share the program details. People are waiting. Mansi ma'am is already asking what are the charges. So just 2 minutes and Anilji will be sharing the program details. Yes, give me just 5 seconds. Rachna ji, are you able to see my screen? Yes. All right. Can we mute everyone else because there's some sound in the background? Sure. Just leave me unmuted. All right. So let us know about the Ashtanga Chikitsa online program details, which a lot of you. Anilji, please unmute yourself. Yes. काफी लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या प्रोग्राम डेट्स हैं, टाइमिंग्स हैं, क्लासेस कब कब होंगी, and the best is fees क्या होगी. This is the most look forward to question. वो जल्दी से हम जान लेते हैं. Let's see. So first of all, this is a guided program which is conducted online by trained Kumbhak mentors. Our mentors are trained by Swamiji, and they'll be the ones who will be looking after you and they'll be the people who will guide you in your classes and make you do all your kriyas. Now, as you must have known by now, Swamiji has already told in the video, there will be 3 modules in the program. Module 1, Module 2 and Module 3. Duration of each module is 21 days. So total duration of the program is 63 days or 9 weeks. Now, in this, you see 9 plus 1. Why 1 week extra? We'll come to know in a short while. There'll be 2 live classes every week, out of which 1 will be the learning class or the main class, and 1 will be the mentoring or the practice class. And you'll get access to all videos, which I'll explain in the later part of my presentation. What are the next steps? You pay the program fee, and there's a very special webinar pricing for people who stayed back and who are attending now. There's a special fee that is being offered to the participant. After that, you fill the participant onboarding form so that we can create login credentials where you'll be able to access the recordings of the class. And then you start your classes starting with module 1 or the Vath module. Basically, module 1, module 2 and module 3 are about balancing Vath, Pitta and Kapha. We'll talk about it in detail in a short while. Total classes will be 6 classes for module 1, 6 for module 2 and 6 for module 3. So total 18 classes plus 1 customization class. What is this customization class? You'll get to know. Now, class start dates for the 98th batch. This is the 98th batch that will be starting on coming Monday, which is 19th September at 6 p.m. Module 2 starts on 11th. Module 3 starts on 2nd November. We'll share all these details in the WhatsApp as well as on chat here on Zoom. What is the class experience is like? You must have known by now that these will be live sessions conducted on the Zoom app. And the mentors watch all the participants so that they can give you the feedback there and then. A lot of people have this question that how we'll be able to do on WhatsApp. Is it really possible? So let me assure you, we've trained more than 1,600 people and we're experts at online therapies, and it's our responsibility to make you do. That's why you get results like what Geeta ma'am or Shruti ma'am shared just now. And there'll be written instructions that you'll be getting in Hindi as well as in English. You can download these and take a printout to do your kriyas daily. And
The session recordings will be there. I already told you. There'll be a lot of extra things that we shared with you. There'll be mental practices that you'll be, getting to learn. There'll be unique diet perspective. Many people have this question that will there be any special diet that we have to follow? No. So you'll get a video from Swamiji in which he'll explain what to eat, in what season what to eat, and how to cook your food so that it does not harm you. You can follow any other diet. There are no diet plans as such, only the diet perspective will be shared. There'll be simple detox processes and a lot of knowledge will be shared with all of you. Now, before I come to the part where we announce the fee, just look at some numbers here. The kind of money we could already be spending on the disease that we are into, or we are just managing the disease. I just written doctor fee here, 6,000 to 12,000 you could be spending just, these are yearly figures. And if you are into physiotherapy, another 12,000 to 30,000, medicines, another 15,000 to 30,000 could be spent. And then if you total all of these, 33,000 to 72,000 you could be spending per year. And if you are using allopathy, then we all know about the side effects, so we won't talk about that much. So this is the kind of money we could be spending, depending, this can be lower or higher, but just to give a perspective as to, because when I announce the fee of the program, that will be nothing compared to this. And also I'd like to talk about some points about who this program is not for. ये प्रोग्राम किन लोगों के लिए नहीं है, ताकि ये क्लियर हो सके किन लोगों के लिए ये प्रोग्राम है. Just give me a few more minutes. This program is not for people who are looking for a magic pill and want results tomorrow only. Although just like Geeta ma'am, she got her results in just one day, but that's very rare and it happens with a lot of people. But it's not a magic pill that we are used to, because most of us have been using allopathy and popping some pills. कुछ भी पेन हुआ हमें दवाई ले लेते हैं, गोली खा लेते हैं, तो उसकी एक आदत बन चुकी है, वो हमारी साइकी में आ चुकी है, वो हमारे माइंडसेट में आ चुकी है कि कुछ भी होता है तो एक उसके लिए दवाई है. तो ये उस टाइप तरीके का प्रोग्राम नहीं है. So you'll have to remember this. And this program is not for who are not ready to work on their body. Because see, a lot of people I talk to, they say that we don't have this much of time जो हमें देना पड़ेगा, daily के तौर पे देना पड़ेगा. तो if you're not ready to work, because see, ultimately it's the body that you can take control of. Environment जो है वो नहीं बदलने वाला है. स्वामी जी ने काफी डिटेल में बात की है. The only thing that we have a little bit of control is our bodies. तो उस पे अगर जब तक वो काम नहीं करेंगे, जब तक strengthen नहीं करेंगे, तब तक एक permanent solution, एक natural solution की तरफ हम नहीं जा सकते. And this is not for those who cannot invest 60 to 70 minutes, maybe 80 minutes also for some people, and maybe some 90 minutes also. This is related to the same question, same last point that I've talked about, that you'll have to spend time on yourself if you are wanting a solution that is permanent and that is natural. So I just want to make it very clear. If you're not ready to invest this kind of time, that this program is not for you. And this is not for those who are impatient. We understand that when we are in pain, we want to get results. We want to solve our problem just now, here and now. But it doesn't happen this way in this therapy. For Geeta ma'am, it was a boon, it was a miracle, like a lot of many other people. But please be patient. If you're not getting the results, please be patient. It will take some time. And then it's not for those who are looking for a free treatment or just some tips. I'd just like to speak here for some time because this is very important. See, most of the participants, 70 to 80% of the participants in the webinar only, they attend the webinar just to pick up some tips because they attend all the webinars of different experts. And one expert could be saying something and the other could be saying the maybe also, but completely different. So if we just work on tips, the health condition that we are into, it doesn't get solved on tips. Or if you're looking for some tips on the YouTube channel, you get a lot of free videos. A lot of people are advising you, but you do not know whether that will make you more, your problem, it will aggravate or will it solve your problem?
if you're looking for a permanent solution, you have to follow one expert only. Don't jump from program to program, whether you join Ashtang Chikitsa or not. That's not the point. The point is just follow one expert. Just follow the whole therapy from zero till you get results. Once you've done with that, then you can follow another expert. So I just wanted to stress upon this. And this is not a free treatment, because we have a team to take care of all of you. We've got 11 people in the team. So we are not sponsored by any team, with any other company, or we are not sponsored by the government of India. So we have to do all the expenses ourselves. So we cannot offer this for free. So if you have this question, so please be clear about this. Now I'll share what you get in the program. This will blow your mind. The Prana Shakti diagnosis for root cause determination. This alone could be worth the total cost of the program. Why? Because through this diagnosis, and it's a unique diagnosis that Swamiji does. It's a non-medical diagnosis, first of all. The second is, it's an online diagnosis. And a lot of people ask, why, how is it possible? I just like to elaborate. I'll just try to, explain it to you. You'll get a form in which you'll be asked to do some experiments on your breath and on your emotions. And you have to record those in the form. Second thing that you will be doing is write about the problem that you are in detail. And the third important thing that you will be doing is you'll be uploading a selfie photograph, shoulder and above, in which the face should be clearly visible. And there has to be no specs. If you wear specs, no specs. And in case of ladies, no makeup. So when these things reach Swamiji, he's able to diagnose what the reason behind what started it, the root cause of your disease. Like in the video, he talked about the 84 forces. So he can find out which force out of those 84 forces has become weak, due to which you've landed into your current situation. And that's very important. This will be the key to the whole diagnosis, to the whole therapy. Next point. There'll be weekly one main class of 60 to 90 minutes. Why 60 to 90? 60 is the actual class. And then we take up the questions, participants' questions, their queries, their doubts. So that's how it can stretch up to 90 minutes. Then again, practice class will be again of 60 to 90 minutes. Online course access for 6 months. Like I told you, that classes are recorded. So these recordings of the classes are available to you, made available to you through a course dashboard. You'll get a login ID and password. You'll be able to log in and see all those recordings there. And these will remain with you for 6 months. Then videos of all kriyas done in the class. How this is different from the recordings? These are separate videos of each kriyas. That a video could be of 2 minutes duration, 10 minutes, 15 minutes, 5 minutes, like this. So if you do not want to go through the whole video of the class, this is of 60 to 90 minutes, you can just watch a short video to know how that particular kriya is done. That's the point, point number 5. Then written instructions in Hindi and English, you can download, take a printout and follow from these. Many people like to read or learn from videos, and some people like to read and then do. So whichever is your style of learning, you can do that. Private WhatsApp group to ask doubts, questions, 6 days. This is very important. Like 2 days of the week, you'll be live with us. Okay. But the remaining days when you're practicing alone, and if you have a doubt that time, if you have a question that time, this is the place where you'll be asking your question or your doubt. Our mentors are added in these groups. So they'll take care of your doubts, your questions, they'll answer you, they'll guide you. And that's how you continue your program on a daily basis. This will be 6 days. The support is provided 6 days from 10 a.m. till 8 p.m. every day, except on Sundays. Our mentors are off on Sundays. So your question will be answered on Monday. Individual participant progress tracking feedback. Unless we know if you're progressing or not, we won't know, you won't know. So we have a individual participant progress tracking. That's a form that you'll be getting. Plus, will be taking feedback from Anita ji from our team. She'll call you each and every participant one by one, and she'll be taking feedback if you're facing any problem in the classes, if you're able to do the kriyas, if you're having any problem in accessing the recordings, if you're able to download the written instruction or not. So this is a personal hand holding. So you need not worry if there's some problem that you face in the class. If you're not able to understand, we have Anita ji who will be, talking to you personally also. And then therapy customization for each participant in the 10th week. This I'd like to stress and you speak a bit more about, because
many people have this question: if everybody's problem is different, how come the same program for everybody? Okay, so what happens is these 9 weeks is 3 primary things. The first thing is the Vata, Pitta and Kapha of the body is balanced. Second is there are 3 basic alignments of the body. Like Swamiji talked in the video also, thighs, navel and chest. These need to be aligned properly. And the third main thing that happens in these 9 weeks is you taught control on exhalation. And this is the reason why people who are doing Kapalbhati on a daily basis, they are advised not to do it for 5 to 6 months. Okay. So based on the Prana Shakti diagnosis, the point number 1 that I talked about, every participant's therapy and the kriyas will be fine-tuned and customized in the 10th week. The body is prepared to receive this customization. That's why we cannot offer it just after your diagnosis, because body needs to be prepared for this. So therefore, it's done in the 10th week. And then extended support for 30 days after the program is over. We know this is an online program and there are some problems and some challenges on an online program. So we understand that. Sometimes some people fall, they're very ill, they are not able to attend any classes, live classes. So we have a 30 days of extra support. This is inclusive in the price. There's nothing extra that is charged from anybody. There's 30 days extra support provided from our side. I've already talked about all these points. Now the program fee for Ashtanga Chikitsa, which a lot of you are waiting for, just 14,500. But like I promised you, there's a special pricing for people who are here attending still. The special pricing, what is it? Just 6,500 for the complete program. It covers the diagnosis, all the 18+1 customization class, then the support, 30 days of extra support. Everything is inclusive in this program. There is nothing that you pay apart from this. All right. Now, how to enroll? Pay the program fee, then you post the payment receipt in the WhatsApp group, and then our team member, they'll pick it up and then note it down and send you the participant onboarding form on your personal chat. Then you join the class WhatsApp group where all the communication regarding your classes, the timing and everything will be done. Then you start attending classes to learn Ashtanga Chikitsa, simple 5-step process. Payment methods we'll share in the chat as well as on Zoom, on WhatsApp group. And I'd like to stop here and talk about the super team that we have. And this team will be at your service. Howsoever good this program may be, but if proper team is not there to take care of the participants, to take care of everything, to take care of the video, the recordings, everything, it can go wrong also. So we have a proper team. We have Rachna Shrivalbotra, she's the program director and the host of this webinar. Shalini Bhagwat, she's the class manager. And then Pooja Chopra, which is another Ashtanga mentor, Ranjana Swain, another Ashtanga mentor, Sukesh Raj, Ashtanga mentor, R.D. Gupta ji, Ashtanga mentor, Soni Chabaria ji, Ashtanga mentor. We have complete lot of mentors so that nobody is left out. No participants is left out. We've got a proper number of mentors that will take care of you and all your classes. We have Neha Upadhyay. She'll be the person you'll be talking to you before you start your classes. She's the enrollment in charge. Anil Chauhan, that's me. I'll be taking up your questions. I'll be answering your questions after the webinar in the WhatsApp group. We may not be able to answer all your questions because since the shortage of time, but whatever, if your question is not answered or if you want to ask again, you can ask in the WhatsApp group. I'll be answering all your questions. Himanshu Reddy, he's the technical person. He's in charge of the recordings, the written instructions. He'll be taking care of your login IDs and passwords. So he's the technical person that you'll be talking to if in case of any problem. Then Anita Vijayan, I just talked about her also. She'll be the one who'll be talking to you on a one-on-one basis. She'll be calling you one by one and talking about your problems. If you want to share something which you cannot share in the WhatsApp group, she'll be the person who you can talk to. So we have a proper team to take care of the participants who enroll, and just be assured that everyone will be taken care of. Because a lot of times we understand that some people are not tech savvy, they have a problem with technology, but we have a proper team. They'll help you with every aspect of this program. They'll be helping you every step of the way.
So be assured, because like I told you, we have trained more than 1,600 people of all age groups. We've had people of 80 years of age also, right? So need not worry. We are there for you. We'll make this program successful for you and get results like Geeta ma'am and Shruti ma'am, and a lot more, many people we cannot, accommodate here. And with this, I come to the end of my part. Namaskar. Thank you so much, Anilji, for sharing the program details. Now, for the much-awaited part of the webinar, Swamiji himself is going to be live to us, excuse me, answer all your questions. So I'll just put Swamiji on spotlight. Namaste, Swamiji. Thank you so much for joining us. Okay, so we'll take up the questions in the chat first. Okay, in the meanwhile, before I open the chat, if there's anybody who has raised their hands and would like to ask their questions, you can definitely do so. Okay. Bhatta Krishna talks about during online practice of Kumbhak, suppose some wrong process is done, then is there any wrong effect on body? Now, you must understand there are two fundamental things in your body. First, there is a base on which activity happens. So there can be activity and the base, the process through which the activity happens. ये दो पक्ष आपके शरीर के हैं. Activity can help you in a certain range, and beyond that range it can be a little harmful. कोई भी activity आपको एक लेवल तक आपको मदद करेगी. For example, if you do exercise, it will help you, but if you push yourself more, then even sports person get into heart attack condition. कई लोगों को तकलीफ आ सकती है. The second part is the base on which the activity happens. Now, if you are working on the base, it cannot harm you. वो आपको नुकसान नहीं कर सकता. Even an activity can harm you. But the base, the factor on which that activity is based upon, that if you work upon that factor, वो आपको नुकसान नहीं कर सकता. कुंभक अगर आप बहुत बेसिक टर्म्स में भी समझें तो let me give you an example of how it cannot harm you. In the history of humanity, मानवता की पूरी हिस्ट्री में एक इंसान बता दीजिए, give me one example of one person who died by stopping his or her breath. अपनी सांस रोक के किसने अपने आप को मार डाला, ऐसा कोई बताइए, एक एग्जांपल बताइए पूरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी. तो आपको नहीं मिलेगा. You won't find even one. Why? क्योंकि आप अपने आप को मारने की इच्छा रख सकते हैं, आपका शरीर नहीं रखता. Your body will not harm you, will not allow you to harm itself. ये आपको बेहोश कर देगा, नुकसान नहीं करेगा. तो किसी और को आपका गला घोटना पड़ेगा, सांस रोकनी पड़ेगी, then it can be a problem. But अपने आप कोई इंसान सांस रोक के नहीं मारा. Secondly, even if you do not have any idea about any activity, कोई आइडिया नहीं है, तो आपको मालूम है कि क्या चीज आपको तकलीफ कर रही है और उससे आप निकल जाते हैं. हाँ, everybody is designed for survival. हर एक इंसान सर्वाइवल के लिए डिजाइंड है. If you have a wrong idea, maybe that wrong idea can kill you. But the very factor of your body through which your body function, it will never do any harm. तो अगर आप ऑनलाइन में कुंभक करते हैं और कुछ गलत कर देते हैं तो क्या इससे आपका नुकसान होगा? आपका नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि अल्टीमेटली यू विल बी इंक्रीजिंग द कुंभक फैक्टर ऑफ योर बॉडी अपॉन विच आप अगर सांस लेते हैं, सांस लेने का पीछे का कारण कुंभक है. इफ यू आर मूविंग योर बॉडी
your body moves upon the kumbhak factor. Even if you are doing rapid breathing के लिए जो support लेते हैं, that is kumbhak. ये जो support system of dynamic activity of your body is kumbhak. नहीं भी समझ में आए तो भी आपको ये बताऊंगा, those support system upon which your life is placed, आपका जीवन जिस पे आधारित है, वो आप उसके लिए कुछ भी गलत नहीं कर सकते. आपके पास में कैपेसिटी नहीं है उसमें गलत करने का. अदरवाइज एवरीबडी वुड हैव किल्ड देमसेल्फ और टेकन बर्थ. एक पैदा अपने आप ही हो जाते या मार लेते. सो द फैक्टर अपॉन विच लाइफ इज प्लेस्ड, उसको, उससे आप अपना नुकसान नहीं कर सकते. उसको करेंगे तो फायदा ही होगा. So the program is designed in such a manner that you cannot harm yourself. Question has been answered whether this will have any adverse effect or not. So Swamiji has just given the answer. Anybody else from the participants who would like to ask a question? Shagufta ma'am says a person who is completely all right in looking, but not. 1 minute. Shagufta ma'am writes. What does that mean? And I couldn't hear you. No. 1 minute. Okay, I'll just read Nilima Rao ma'am's question. I'm Nilima, suffering from dry mouth with sores on tongue and lips. So can this problem be solved? तो ड्राई माउथ. अच्छा, पहली बात, जो भी आपने अभी वेबिनार में हैं, बिकॉज वी ओनली वांट सीरियस पीपल है ना, जो विंडो शॉपिंग करने आते हैं वो नहीं चाहिए अपने को ना. आप लोगों में से हर एक को एक रिक्वेस्ट है, व्हेनेवर यू हैव अ प्रॉब्लम, ट्राई टू अंडरस्टैंड इन योर ओन टर्म्स. अगर ये जो बड़े बड़े शब्द आप देखते हैं ना, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, न्यूरो प्रॉब्लम, डीजेनरेटिव प्रॉब्लम, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऐसे ऐसे वर्ड शब्द जो बोलते हैं ना, वो आपको एक्चुअली समझ में नहीं आता. वो शब्द कोई समझा देता है आपको, पर आपको समझ में नहीं आता. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनने में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और प्रॉब्लम लग रही है, मगर एक बात समझिए, आपके ड्राई माउथ हो रहा है और छाले आ रहे हैं मुंह पे, अगर, तो ये प्रॉब्लम किस चीज का है? ये प्रॉब्लम आपके लिवर के साथ में एसोसिएटेड. लिवर या आपका शरीर उतना ही हेल्दी होगा जितना आपके शरीर में पानी टिकेगा. आपके शरीर में पानी जितना होल्ड कर पाएंगे उतना ही हेल्दी होगा. तो हेल्थ का एक अलग डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूं. हेल्थ को मैं बहुत तरीके से डिफाइन करके बताता हूं. वन ऑफ द डेफिनेशन इज हाउ मच वाटर योर बॉडी कैन होल्ड, दैट मच हेल्थ यू विल हैव. तो ये जल तत्व ही है जिसकी वजह से दो चीजें, आप समझिए, दो चीजें आपके बॉडी में होता है. एक मेटाबॉलिज्म, आपके शरीर में आप बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, मगर ये आपको मालूम नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, चीजों को अगर आप अपनी भाषा में, लोकल लैंग्वेज में भी समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा. रोमन लैंग्वेज में समझ में नहीं आता कुछ भी. आप, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है द एबिलिटी टू ट्रांसफर वन थिंग फ्रॉम द अदर, यानी कच्चे माल को पके माल में कन्वर्ट करना. फैक्ट्री होती है ना, कच्चा माल को एक तैयार माल बनाती, तो ये कितने अच्छे से बना पाती है, दिस इज मेटाबॉलिज्म. इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं. तो आप जो भोजन खाते हैं वो आपका शरीर कितने अच्छे से बन पाता है, इसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं. और आपके शरीर में 7 तरीके के टिश्यूज होते हैं. वो टिश्यूज एक के बाद एक, उनमें एनर्जी लगती है कन्वर्ट करने. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, अलग अलग कैटेगरी के टिश्यूज हैं. तो आप जब भोजन करते हैं वो कितना कन्वर्ट होता है. तो ये कन्वर्ट किस चीज पे होगा? ये हमेशा जल तत्व पे होता है, वाटरी मीडियम से ही होता है. तो अगर आपका शरीर वाटर होल्ड नहीं कर पाएगा तो आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होंगे. नाउ टेल मी, आप जरा इसका प्रूफ देख लो. डायबिटीज बढ़ रहा है ना, बहुत तेजी से बढ़ रहा है. ये क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. दूसरी चीज क्या देखेंगे? थायराइड बढ़ रहा है ना, हाइपोथायराइड इशू, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है.
अगर इसको कोरिलेट करके आगे कुछ और प्रॉब्लम्स हम देखेंगे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और कैंसर तक कहीं ना कहीं शुरुआत में आपके मेटाबॉलिज्म से जुड़े हुए हैं। और आपका मेटाबॉलिज्म किस पे डिपेंड करता है? हाउ मच वाटर योर बॉडी कैन होल्ड। अगर आपका शरीर डिहाइड्रेट हो जाएगा तो आपका मेटाबॉलिज्म वीक हो जाएगा। तो आप जब भी एक एंटीबायोटिक खाते हो, एक केमिकल डालते हैं, जब भी शरीर में एक केमिकल डालते हैं, आपका शरीर डिहाइड्रेट होता है। तो आपने कितनी दवाइयां खाई होंगी बचपन से? आप याद कीजिए, जब आप पैदा हुए थे उस समय से आपके शरीर को बॉम्बार्ड करना शुरू किया था। तो आप आज तो ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं, यानी कि आपका शरीर में पानी नहीं टिक पा रहा। और पानी आपके शरीर में नहीं टिकेगा या केमिकल खाएंगे तो आपका लिवर जो है उसी पे जाके बॉम्बार्डिंग होती है, तो लिवर में प्रॉब्लम आना शुरू होगा। सिरोसिस लिवर का एक कॉमन चीज है आजकल, फैटी लिवर एक बहुत कॉमन चीज है, लिवर डिस्क्रिपेंसी किसी तरीके की प्रॉब्लम एक बहुत ही कॉमन चीज। ये क्यों हो रहा है? पहली चीज, आप दवाइयां खा रहे हैं। दूसरी चीज, आप जो फूड खा रहे हैं, द फूड दैट यू आर ईटिंग इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, वो आपका भोजन है। आपका वातावरण खराब कर दिया, बॉडी रिस्क में आ जाती है, तो आपका लिवर सबसे पहले इंपैक्ट होगा, राइट? ऐसे ही अगर आप देखेंगे, हमने आसपास में पानी कम कर दिया, ताल तालाब सरोवर कहां है आपके आसपास में? अंडरनीथ योर फीट, आपके पांव के नीचे, वेयर हैज द वाटर टेबल गॉन? पानी का स्तर कहां गया? जब पानी आपके आसपास में नहीं होगा तो आपकी हेल्थ पे असर आएगा। सो अब क्या करना है? आपके लिवर को थोड़ा ठीक करना होगा। बिना लिवर को ठीक किए ये प्रॉब्लम नहीं जाने वाली। तो लिवर को कैसे ठीक करेंगे? जब आपके पानी होल्ड करने की कैपेसिटी शरीर की ज्यादा हो जाएगी तो आपका लिवर स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। एक और भी तरीके हैं इसको स्ट्रांग करने के। अच्छा, पानी होल्ड करने की कैपेसिटी आपके शरीर में बढ़े, ये कुंभक से ही होगा। एक सिंपल तरीके से बताता हूं, अगर एक तरीके से कुंभक करेंगे, जैसे कि 1 यूनिट इनहेलेशन, 1 यूनिट होल्ड, 4 यूनिट एक्सहेलेशन, तो ये आपके लिवर को ठीक करना चालू कर देता है। तो आपके बॉडी में जो जल तत्व अवेलेबल वाटर है उसका मूवमेंट चालू हो जाता है, ठीक है। और दूसरे हम कुंभक सिखाते हैं जिससे कि जल तत्व वाटर एलिमेंट को आप होल्ड करता है। तो क्या और कोई इलाज है इसका? लिवर को क्या आप दवाइयों से ठीक कर सकते हैं? ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे आपका लिवर ठीक हो, और ऐसी दवाई हो नहीं सकती। जितनी दवाइयां हैं वो आपके लिवर को खराब ही करती है। तो अगर आपके शरीर को आपको बचाना है इस वक्त में, तो फूड कैन नॉट हेल्प यू, आपको भोजन हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि आप बदल ही नहीं सकते भोजन। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है हर जगह पे। वातावरण बदल नहीं सकते, पानी तो जमीन के नीचे लेके नहीं आ सकते आप, आसपास में पानी लेके आ नहीं सकते आप। दवाई खाने से आप हट नहीं सकते, क्योंकि ऐसा माहौल है जहां आपको डर के मारे भी दवाई खानी पड़ेगी। तो लिवर तो आप खराब करेंगे। ऐसे में अगर बचना है तो कुंभक करना पड़ेगा, तभी आप बच पाएंगे और ऐसी सिचुएशन से निकल पाएंगे। Okay, the next question is from Bipsha Roy. Right hand is not moving backward, upward after falling on the floor 1 year ago, and now continuous pain but inflammation, but not continuous pain but inflammation from right shoulder to upper arm, and sometimes full hand, thyroid problem and constipation, and also mood swings. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, आपको ये बात बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना चाहिए। When you go with your 4-wheeler, आपका 4-wheeler होता है ना, 4-wheeler जो है, आप किसी बहुत ही उबड़ खाबड़ जगह में चले जाएं, यू नो दैट क्रिएट्स मिसअलाइन, अलाइनमेंट बिगड़ जाता है आपकी गाड़ी का। आप अलाइनमेंट करवाते हो ना फिर गाड़ी का। अगर आपकी स्टीयरिंग लेफ्ट भाग रही है, राइट भाग रही है, तो आप अलाइनमेंट करवाते हो कि नहीं? आपको अलाइनमेंट करवाना पड़ता है, और अलाइनमेंट अगर रेगुलर इंटरवल पे करवाएं तो आपकी गाड़ी सही चलेगी, अदरवाइज इट कैन क्रिएट लॉट ऑफ मैकेनिकल प्रॉब्लम। मगर आप बताइए, आप दिन भर शरीर को जैसे मर्जी वैसे इस्तेमाल करते हैं और गिरते पड़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम भी आती है इसके अंदर, टेढ़े बैठते हैं, सीधे बैठते हैं, स्ट्रक्चरल इशू होता है, मगर आप अलाइनमेंट कभी करते ही नहीं। क्या कमाल की बात, आप अलाइनमेंट करते ही नहीं हो अपने शरीर। क्यों नहीं करते अलाइनमेंट?
फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, तो दर्द की गोली लेके आप ठीक करोगे, मगर क्या दर्द की गोली लेके अलाइनमेंट हो जाएगा आपका? आप बताइए, एंटी इन्फ्लेमेटरी ले लिया आपने, कुछ अपने शरीर को ठंडा करने के लिए लिया, दर्द कम होगा, अलाइनमेंट तो बिगड़ा ही हुआ है आपके शरीर का। अगर लंबे समय तक अलाइनमेंट बिगड़ जाए तो डू यू थिंक योर बॉडी विल रिमेन हेल्दी? इट विल नॉट क्रिएट एनी अदर प्रॉब्लम, कोई और प्रॉब्लम नहीं करेगा आपका शरीर। जैसे कि मैंने बताया आपको थायराइड भी है, कॉन्स्टिपेशन, अगेन कॉन्स्टिपेशन वन फैक्टर इज वाटर एलिमेंट ऑफ द बॉडी, आप जल तत्व रोक नहीं पा रहे। दूसरा फैक्टर, बहुत रिस्क होने से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। अब जब आप रिस्की सिचुएशन में चले जाएंगे, आपके घर में कोई अगर रिस्क हो जाता है, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है, तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन हैपेंस ड्यू टू रिस्क, एंजाइटी इश्यूज। अगर बहुत जल्दी डर जाते हैं सिचुएशन से, तो आप देखेंगे इफ योर नर्वस सिस्टम इज ओके यू विल गेट कॉन्स्टिपेशन, अदरवाइज यू विल गेट लूज मोशन। तो नर्वस सिस्टम जिन लोगों का वीक है उनको लूज मोशन हो जाता है, दिन का थोड़ा अभी तक ठीक है, उनको कॉन्स्टिपेशन होता है। तो रिस्क तो आपको हटाना पड़ेगा। जितनी चीजें मैंने पहले बताई वो सारी भी रिस्क है। दवाइयां आपके बॉडी के लिए रिस्क है। अगर आप अपने शरीर को दवाई से ही ठीक करना शुरू करेंगे, रिस्क बढ़ा के ठीक करना शुरू करेंगे, तो वो ठीक होगी कभी? तो मुझे बता लीजिए, कोई भी क्रॉनिक डिजीज को एलोपैथी ट्रीट कर पाता है? या पीपल आर गेटिंग इनटू मोर क्रैशेस। आप ऑब्जर्व तो कीजिए कम से कम, कोई आपको प्रेजेंट कर रहा है, आप अपने अपने दादा दादी नाना नानी को देख लीजिए, वो आपसे हेल्दी थे या खराब थे? तो यानी आपको हेल्दी किया जा रहा है या खराब किया जा रहा है? इतनी प्रॉब्लम कभी नहीं थी ह्यूमैनिटी को। द ह्यूमन बीइंग, द ह्यूमन स्पीशीज हैज सर्वाइव फॉर मोर देन मिलियंस ऑफ ईयर्स से आ रहा है ना। ये पिछले 50 साल के अंदर तो प्रॉब्लम आ रही। तो प्रॉब्लम जिसने क्रिएट किया, उसी से प्रॉब्लम को अगर आप ठीक करना चाहेंगे, इससे बड़ी बेवकूफी हो सकती है? दिस इज कॉल्ड एज वेस्टर्न थॉट प्रोसेस, वेस्टर्न साइंस कहते हैं इसको। वेस्टर्न साइंस इज अ किलिंग मशीन। वेस्टर्न साइंस ऑफ किलिंग मशीन। साइंस तो भारतीयों की देन है, साइंस तो हिंदुस्तान की देन है दुनिया को। असली साइंस तो आपको करना पड़ेगा कभी ना कभी। तो अब अलाइनमेंट करना पड़ेगा। एक तो चीज है कि आपको अलाइनमेंट करेंगे तभी जाके आपका बॉडी जो है वो आपका शरीर ठीक कर देता है अपने आप को, किसी भी तरीके से ठीक कर। थायराइड इशू जो है, वंस अगेन इट्स एन इशू ऑफ, इट्स अ मेटाबॉलिक इशू, बट इसके अंदर आपका रीजेनरेटिव फैक्टर सबसे ज्यादा पर नुकसान होता है। यानी आपके अंदर प्रोटीन नहीं बनता। थायराइड ना प्रोटीन से भी एलर्जी है, प्रोटीन से एलर्जी को भी आप थायराइड बोल सकते हैं। तो अगर प्रोटीन खाना कम कर देंगे तो थायराइड की सिचुएशन सुधर जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके शरीर के रीजेनरेटिव फैक्टर को तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो अब मैं आपको बताता हूं, आपको एक तो अलाइनमेंट करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या करनी पड़ेगा, अपने शरीर का स्ट्रेंथ जो वीक हो गया, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ से लेके बाकी स्ट्रेंथ को भी आपको इंप्रूव करना होगा। स्ट्रेंथ, तीसरी चीज जो आपको लेके आना पड़ेगा वो है आपके बॉडी का क्रिएटिव एबिलिटी। प्रोटीन जो है आपके बॉडी की क्रिएटिव एबिलिटी से आता है, रिदम से आता है, लय से आता है। भाव, राग और ताल, रिदम, बैलेंस एंड स्ट्रेंथ, ये तीन चीज, भारत, ये आपके देश में ही आपके हेल्थ की कुंजी है। ये आपको करना पड़ेगा। अलाइनमेंट तीन तरीके के करने पड़ेंगे आपके बॉडी में। नाभि, कौड़ी, नले। नाभि का अलाइनमेंट करना पड़ेगा ताकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपका ठीक हो। कौड़ी का अलाइनमेंट, मिडिल ऑफ चेस्ट का अलाइनमेंट आपको ठीक करना पड़ेगा ताकि आपको कोई भी लंग और हार्ट से रिलेटेड इश्यूज ना आए। तीसरी चीज जो करनी पड़ेगी वो है आप नले, दैट मीन्स आपकी जांघों का अलाइनमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ इट द स्ट्रेंथ फैक्टर विल गेट एस्टैब्लिश्ड इन योर बॉडी। ये हम अपने प्रोग्राम में अष्टांग चिकित्सा के अंदर ये सारी चीजें है ही। So if you spend a little time with your body, you will see your body can create health, and your body can create what you can, body can take you out of any disease. आपका शरीर एक मैजिक है, इसको सपोर्ट कीजिए, ये आपको बीमारी से निकाल देगा। Okay. Meena ma'am writes, I suffer from acidity and also a big problem regarding sleep and also knee problem. See, I can talk in technical terms. नी प्रॉब्लम, ज्यादातर लोगों को जो नी प्रॉब्लम आ रही है ना, ये नागदोष कहते हैं इसको। ठीक है, एक पक्ष है, आयुर्वेद इसको कहता है वात रोग, और इससे भी अगर आगे जाएं, डीप जाएं, तो ये नागदोष आता है। दूसरी प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं
एसिडिटी अगेन इट्स एसोसिएटेड विथ नागदोष, और नींद की प्रॉब्लम ये भी नागदोष। अब एक पॉइंट पे लेके आ गया मैं आपको, अब ये नागदोष क्या सो अगर इस पे डिस्क्राइब करने जाएंगे तो घंटों घंटों लग जाएंगे, बट दिस इज अ फैक्टर, दिस इज द फंडामेंटल फैक्टर ऑफ हेल्थ इन योर बॉडी, ऐसे मान के चलो। So Naga aspect is an aspect which you can call it as a unidirectional movement aspect. एक दिशा में मूवमेंट जो है ये नाग शक्ति के कारण होता है, जैसे कि आपका ब्लड फ्लो एक डायरेक्शन में होता है, हार्मोन फ्लो एक डायरेक्शन में होता है, आपका फूड का फ्लो एक डायरेक्शन में होता है, यूरिन फ्लो एक डायरेक्शन में होता है, फीकल मैटर का फ्लो एक डायरेक्शन में होता है, इवन योर थॉट प्रोसेस, 50% of your thought process moves in one direction. Mostly it moves in one direction, but ideally 50% at least should move in one direction. Rest 50% should move parallelly. आपके थॉट प्रोसेस दो तरीके से होते हैं, लीनियर एंड पैरेलल। जो लीनियर फैक्टर है वो नाग फैक्टर है। तो नाग फैक्टर अगर आप ठीक कर लेंगे, तीनों चीजें ठीक हो जाएंगी। हाँ, एसिड रिफ्लक्स या फिर एसिडिटी जब आप फील करते हैं तो बेसिकली आपके एसिड को एक ही डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, वो उल्टा मूव करने लग गया, है ना। तो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट खराब होगा, इसी को सिंपलिस्टिक टर्म्स में यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट कह रहे हैं, अदरवाइज ये एक बड़ा आयाम है जिसे नागदोष कहते हैं। ऑल्सो एक और चीज मैं बताऊं कि आयुर्वेदिक टर्म्स में इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। आयुर्वेदिक टर्म्स में ऐसा बोलेंगे कि पित्त, ये पित्त दोष का एक पार्ट है। पित्त फैक्टर अगर आपके बॉडी में, अगेन कोरिलेट व्हाट आई हैव सेड अर्लियर, पहले क्या बोला, आपका बॉडी वाटर होल्ड नहीं कर पा रहा। वाटर अगर आपका बॉडी होल्ड कर पाएगा तो टेम्परेचर बैलेंस कर सकता है, अग्नि को जल तत्व बैलेंस में रखता है। अगर वाटर नहीं होल्ड कर पाया, आपका शरीर डिहाइड्रेट हुआ तो गर्मी बढ़ जाएगी आपके शरीर में, ये पित्त विकार आ गया। अगर आपका मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ नहीं होगा ठीक, तो आपका बॉडी क्रिएट करेगा वो मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ बाय इंक्रीजिंग द हीट फैक्टर ऑफ योर बॉडी। और कभी कभी जब रिस्क होता है तब भी शरीर हीट बढ़ाता है, जैसे आपको इन्फेक्शन हो गया तब भी बॉडी हीट बढ़ाता है। तो कॉन्स्टेंटली हीट बढ़ा रहा है, यानी कि कॉन्स्टेंटली कुछ प्रॉब्लम चल रही है अंदर और उसको शरीर ठीक करना चाहता है। तो पित्त दोष भी आ सकता है, ये आयुर्वेदिक टर्म्स में देखें तो। यहां पे पित्त दोष, अगर आप अपने शरीर को थोड़ा ठंडा कर लेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा, मगर ये मैनेजमेंट है, ये कोई इलाज नहीं है। आपको अपना नाग पक्ष ठीक करना पड़ेगा, उसके लिए हम स्पेशल प्रोसेस देते हैं। जब आप प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, वी डायग्नोस यू, वी गिव यू स्पेशल प्रोसेस फॉर योर प्रॉब्लम, है ना, वो वहां पे हम देते ही हैं। तो उस पक्ष को ठीक करना सोल्यूशन। Okay, Prakash sir says how we can come to know that which force is weak. देखिए इसका दो पार्ट में बताता हूँ। इधर यू गेट ट्रेन टू, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी इसकी, कैसे पता करें। और पिछले 3 साल में किसी का भी कोई इंसान मुझे मिला नहीं जिसको मैं ट्रेन कर पाऊं इस तरीके से, पिछले 3 साल में तो नहीं मिला। आप अगर चाहते हैं तो आप आ जाइए, आपको ट्रेन करते हैं, मगर कितने साल लग जाएंगे हमें मालूम नहीं, हो सकता है 5 साल ले लें आप इसको समझने में। मगर एक चीज बताइए, ये कितना भी समझ जाए, क्या आप ठीक हो जाएंगे उससे? आप ठीक तो नहीं होंगे सब। इतना गूगल में ज्ञान है, सभी बीमारी पड़ जा रहे हैं। नहीं, ये जो ज्ञान है ना, ये बहुत ही, ये ज्ञान नहीं है, ये आप गलत सोच रहे हैं। किसी चीज को समझने से आप ठीक नहीं होते, ठीक है ना। आपको कम से कम इतना इंटेलिजेंट तो लाना पड़ेगा। पढ़े लिखे लोग वैसे ही इंटेलिजेंट नहीं होते, कम इंटेलिजेंट होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च, 70% इंटेलिजेंस कम हो जाता है पढ़े लिखे लोग। तो आप जान भी जाएं तो भी ठीक नहीं कर पाएंगे। मगर क्या आपको जानना चाहिए? अगर आपकी इच्छा है तो आपको जानना चाहिए, हम उसमें हेल्प भी कर सकते हैं। मगर आप अभी ठीक हो जाइए, पहले अपनी हेल्प कीजिए। सो वी विल डायग्नोज इट फॉर यू। अभी हम आपके लिए आपको डायग्नोज कर देंगे। अगर आप सीखना चाहेंगे तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, उसके बाद लोगों की हेल्प कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, हम आपको सिखाएंगे, फिर बाकी लोगों की भी आप हेल्प कीजिए। Okay, Zoom user, I have liver issues and I have stones in the gallbladder. Can this be cured? Stones in the gallbladder,
इसको कैसे देखा जाए? क्या ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहे गॉल ब्लैडर स्टोन के? हाँ, तो आप अपनी समझ में लेके आओ चीजों को। वापस से कह रहा हूं, गेट इट इनटू योर अंडरस्टैंडिंग। इफ समथिंग ड्राइज अप, कोई चीज सूख जाती है तो वो हार्ड हो जाता है ना? हार्ड होता है कि नहीं? कोई चीज सूख जाती है तो हार्ड हो जाता है ना? अब दोबारा से शुरुआत मैंने किससे कहा था? यू आर नॉट एबल टू होल्ड वाटर एलिमेंट, वाटर जल तत्व आपका शरीर होल्ड नहीं कर पा, तो सूखेगा अंदर, डिहाइड्रेशन होगा, तो क्या चीज होगी? स्टोन्स होंगे आपके शरीर में। कहीं पर भी स्टोन्स हो रहे हैं, वो स्टोन्स होंगे। तो स्टोन्स क्यों बढ़ रहे हैं आपको पहली बात ये समझ में आना चाहिए। स्टोन्स भी एक कारण है, दिस इज ऑल्सो अ रीजन that your body, because of your body is not able to hold water, stones are forming. और इसके साथ में और भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर साथ में जुड़ जाता है। अच्छा, स्टोन्स अगर है तो सोल्यूशन क्या है उसका? गॉल ब्लैडर निकाल दो, यही आपको सोल्यूशन यही बताया जाएगा। क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन को नहीं निकाल सकते, तो गॉल ब्लैडर निकाल दो। मगर गॉल ब्लैडर निकाल देंगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ ही जाएगी, कम नहीं हो। तो ये सोल्यूशन नहीं होता है। अच्छा, और सिंपल तरीके से सोचते हैं कि आपके शरीर में कोई चीज अटक रही है, हार्ड है, रास्ते में आ रही है फ्लो में, उसको निकालने का क्या तरीका? तो याद कीजिए, आपके किचन में अगर आपके बाथरूम में नाली ब्लॉक हो जाती है तो आप क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा प्रेशर लगाते हैं, ऊपर से थोड़ा जोर लगाते हैं तो वो निकल जाता है। शरीर के अंदर जोर कहां लगा रहे हो आप बताओ? बचपन से लगाया कुछ? हमने जोर लगाना भी कम कर दिया, बाहरी जोर लगाना भी कम कर दिया, अंदरूनी जोर तो हम लगा ही नहीं रहे। अगर आप एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जो सभी कोरिलेट कर पाएंगे, थोड़ा कॉन्स्टिपेटेड सिचुएशन है आपके बॉडी में, यू गो फॉर डिफिकेशन, आप मल त्याग के लिए जाते हैं तो जोर लगाते हैं कि नहीं लगाते? कोई चीज निकालने के लिए जोर लगाते हैं ना, ये सभी को मालूम ही है ना, सबके एक्सपीरियंस में है। तो आपके शरीर में भी अगर कोई स्टोन है और अंदर जोर लगाएं सही तरीके से, कुंभक वही है। कुंभक क्या है? अंदरूनी जोर लगाना। इससे आपके ऑर्गन मजबूत होंगे, गॉल ब्लैडर स्टोन निकलेंगे, किडनी स्टोन निकलेंगे। स्टोन सभी के फॉर्म होते हैं बट निकल जाते हैं, आपका नहीं निकल पा रहा, आप जोर नहीं लगा रहे। दूसरी बात ये, अगर बहुत बड़ा हो गया तब तो भाई ऑपरेट ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप जोर भी लगाओगे तो अटक जाएगा रास्ते में, कई जगह पे आपको पेन, दर्द फील होगा। तो अगर कोई स्टोन 8 मिलीमीटर से बड़ा है ना, तो या तो उसको तोड़ो किसी ना किसी दवाई से। आयुर्वेद में दवाइयां हैं जो स्टोन को ब्रेक कर देती, इवन होम्योपैथी में है दवाइयां। तो उसको थोड़ा समय इस्तेमाल करके कोशिश करो कि वो थोड़ा टूटे, थोड़ा गले, और कुंभक करेंगे तो वो निकल जाएगा। अदरवाइज 12 mm से ऊपर चला गया तो फिर चांसेस हैं कि अगर तकलीफ आ रही है तो ऑपरेट करवा लीजिए इसको। मगर ऑपरेट करवाने के बाद दोबारा स्टोन होगा कि नहीं होगा? क्वेश्चन मार्क। दोबारा हो जाएगा, क्योंकि टेंडेंसी के लिए तो आपने कुछ किया नहीं। आपके बॉडी में स्टोन फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी बन गई है, उससे ठीक होने के लिए तो आप कुछ कर नहीं रहे। तो आप ऑपरेशन कराओ चाहे नहीं कराओ, चाहे जो मर्जी करो, कुंभक तो कंपलसरी है। मैं ये बताना चाह रहा हूं। Okay. Now we can take up the questions from the chat. Anybody? Sushil, you can ask your question, please. Sushil, please unmute yourself. Hello, can you hear me, Swamiji? हाँ जी बोलिए। Okay. So it was a good session. I enjoyed hearing that. I have two things. One, I have ankylosing spondylosis. So my, the backbone has completely fused. And of course, it has fused in such a manner that there is a deformity, etc. And same way, one of the hip has, deformed. And of course, I've been advised the
hip replacement surgery, which I have not done, and I want to try out the other methods for sure. And second is I have irregular heartbeat, arrhythmia. So I just wanted to understand, I'm sure this program can help, but if you can elaborate a little more, and especially in case of arrhythmia, whether it can have any negative impact or any other issues. We run a heart care program separately for people into heart issues and even blood pressure related issues. We have a separate program dedicated to that, and many people, there are a lot of testimonials where their blood pressure has become fine, their medicines, they have dropped completely. Heart patient with a lot of stents in their heart, with other kinds of surgeries of heart, valve replacement and other issues, LVH, left ventricular hypertrophy, arrhythmia, tachycardia, bradycardia, AV, node issue, and so on and so forth. तो पहली बात ये कि there is no solution for all those kind of things. अगर आप ये सोचते हैं कि उसका कोई solution, अगर आप सोचते हैं your bones are fusing, उसका कोई solution है एलोपैथी में, तो there is no solution. Hip replacement will not help. Today you are walking, maybe you may be walking with whatever difficulty, but the hip replacement happens, you will not even be able to walk. तो घुटना रिप्लेस करने के बाद हमारे एक बड़े फेमस प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनका नी रिप्लेसमेंट होने के बाद उन्होंने व्हीलचेयर पकड़। सो लॉट ऑफ एग्जांपल्स यू कैन सी, एंड एक चीज तो आप अपनी समझ से भी समझ, यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू योर अंडरस्टैंडिंग, थ्रू योर इंटेलिजेंस. इफ यू पुट एनीथिंग इनसाइड योर बॉडी विल ट्राई टू पुश इट आउट. वो एक्सेप्ट नहीं करता आपका, तो यू विल बी पुट ऑन लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड थेरेपी. आपको 6 महीने की स्टीरॉइड थेरेपी पे डाला जाएगा. Now what will steroid do? Steroid will lower down your immune system. आपके immune system को एकदम से कम कर देगा. It will lower down the functional capability of your body. आपके शरीर की function capability को बहुत ही खराब कर देगा. So due to long-term steroid therapy, lot of complication. People face lot of complication. उनको बड़ी complication के साथ गुजरना पड़ता है. So the kind of treatment that is happening at this point of time is not helping people. Their quality of life goes down drastically. वो करवा तो लेते हैं इतने सर्जरी और whatever intervention, but their quality of life degrades to such an extent कि अभी इसके बारे में बात करें तो बहुत ही कंट्रोवर्सी होता है. So अभी क्या कर सकते हैं? Let's talk about solution. हाँ, क्या इसको ठीक किया जा सकता है? So I have cases, मेरे पास में cases हैं. There was a person, a very close friend of mine. उसके सारे ही joints fuse हो जाते थे. उसके सारे joints fuse हो जाते थे. And I'm talking about 10 years back, 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ. Today that person is there. और जिस तरीके की complication उसको डॉक्टर्स ने बताई थी और एक्सप्लेन किया था, he should not be moving at this point of time. इस समय वो इंसान को जिंदा नहीं रहना चाहिए. Because he couldn't move. वो शरीर की कोई हड्डी ही नहीं हिला. अब जॉइंट से आप मूव नहीं करेंगे तो आप वॉक कैसे करेंगे बता दीजिए. आप लेटेंगे कैसे? He couldn't sleep. He couldn't lie down. तो क्या हुआ? उसको कुंभक करवाया गया. कुंभक करवाते ही the moment he would do kumbhak, he'll feel that his joints have become supple. उसके बॉडी का हीट जब भी बढ़ता था तो उनको अपने जॉइंट्स में सपलनेस फील होता था. एंड दैट पर्सन इज वॉकिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, प्रॉपरली वॉकिंग. कोई ऑपरेशन नहीं करवाया. जिस इंसान को सर्वाइव नहीं करना चाहिए था 1-2 साल, ऑपरेशन कराओ तब जाके 1-2 साल आप सर्वाइव कर पाओगे. वो इंसान सर्वाइव कर पाए. अब इसको थोड़ा समझने की बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता. वंस अगेन एक बात आपको मैं बताऊं कि जब भी आप कोई ऐसी चीज आपके शरीर के साथ में करते हैं विच चेंजेस, आपके शरीर में चेंजेस बहुत जल्दी आए. ऐसा कोई भी शरीर में चीज डालेंगे ना तो फर्स्ट थिंग दैट विल गेट इंपैक्टेड इज रीजनरेशन फैक्टर. आपने एक दर्द की दवाई खाई, उसने कुछ जबरदस्ती आपके शरीर के साथ में करता है, रेट ऑफ चेंज को चेंज कर दिया.
तो रेट ऑफ चेंज, अगर आपके बॉडी में जो रेट से चेंज हो रहा है आपका शरीर, अगर उसमें आपने दखल अंदाजी कर दिया, तो सबसे पहली चीज क्या इंपैक्ट होगी? रीजनरेशन फैक्टर। आपके बॉडी में रीजनरेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। तो क्या मैं ये सही बोल रहा हूं? सो लुक फॉर डेटा इन गूगल, हाउ मेनी डीजेनरेटिव डिजीज इज हैपनिंग। न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, जो अवीसा का हम ये अष्टांग चिकित्सा करवा रहे हैं, फोकसिंग एट न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, एवरीबडी इज फेसिंग डीजेनरेटिव डिजीज, एवरीबडीज डिजीज इज डीजेनरेटिव। Rheumatoid arthritis is a degenerative disease. Osteoarthritis is a degenerative disease. Spondylitis and other things, जो आप कह रहे हैं, fusing of bones is due to degeneration. Regeneration is not happening. तो जब भी जिस समय आपने कोई ऐसा काम किया, शॉर्टकट अपना अपने बॉडी के लिए, इसके हेल्थ फैक्टर्स को बिल्ड करने की बजाय आपने मैनेज करने की कोशिश की, यू क्रिएटेड अ डीजेनरेटिव, इंक्रीज द डीजेनरेटिव फैक्टर। तो जब भी आपके शरीर में एक दवाई डाली गई, आपका डीजेनरेटिव फैक्टर इंक्रीज हो गया। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या ये साइंस है? दवाई खाना क्या ये साइंस है? दवाई खा के मैनेज करना क्या ये साइंस कहलाया जा सकता? मोमेंट यू डिस्ट्रॉय द रीजनरेटिव फैक्टर ऑफ योर बॉडी, आर यू डूइंग साइंस ऑन योर बॉडी और आर यू डूइंग सम काइंड ऑफ वॉर ऑन योर बॉडी? तो आप तो लड़ाई कर रहे हो अपने शरीर के साथ में, और लड़ाई करने वाली प्रवृत्ति के इंसान कहां बसते हैं? ऑल द वेस्टर्न पीपल आर ऑल लड़ाई करने वाले लोग हैं, और साइंस आपने उनको पकड़ा दिया, तो ऑब्वियसली दे विल किल विद साइंस। सो वेस्टर्न साइंस इज अ किलिंग मशीन। इसको आप देख लीजिए, फैक्ट देख लीजिए, फैक्ट चेक कर लो। तो डीजेनरेटिव फैक्टर को तो आपको रोकना पड़ेगा ना, रीजनरेशन क्रिएट करना पड़ेगा, रीजनरेशन क्रिएट करना पड़ेगा। मगर रीजनरेशन कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं? आप कैसे किसी चीज को बढ़ाते हैं, बनाते हैं? आपका स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेंथ, आयुष, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयुष? आयुर्वेद जब आप बोलते हैं, आयु का मतलब क्या होता है? आयु का मतलब आप एज के साथ में कनेक्ट करते हैं, मगर एज किस वजह से होता है? जस्ट गो अ लिटिल डीप। एज किस वजह से? आपकी, जिसे हम कहते हैं अलाइवनेस, जीवंतता आपकी जितनी बढ़ेगी उतनी आपकी एज होगी। तो आपने जीवंतता बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो? हाँ, जब आपकी एनर्जी बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो? सिंपल टर्म्स में समझो, एक दिन कुंभक करके देखो, एक दिन कुंभक करके देखो, एक दिन कुंभक नहीं करो, आपको दोनों दिन में फील हो जाएगा क्या फर्क है। द मोमेंट यू डू कुंभक, यू इंक्रीज योर अलाइवनेस। सो कुंभक को अगर मैं सटीक तरीके से डिफाइन करूं, तो ये आयुर्वेद, ये फुल अपने ग्लोरी में आयुर्वेद है, होलिस्टिक आयुर्वेद है। आयु का मतलब होता है इंटेंसिटी, वेद का मतलब होता है उसको जानना, हाउ टू इंक्रीज द इंटेंसिटी। तो दिस इज लाइक होलिस्टिक ट्रीटमेंट। तो अगर आप, और इससे रीजनरेटिव फैक्टर बढ़ेंगे, और भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं कैसे रीजनरेटिव, और कैसे बढ़ेंगे रीजनरेटिव फैक्टर, मैं घंटों तक एक्सप्लेन कर सकता हूं। मगर अगर आप अपने शरीर का मेटाबॉलिक फैक्टर इंप्रूव कर देंगे, आपके जॉइंट्स में सपलनेस आ जाएगा, अलाइनमेंट कर दो, थोड़ा मूवमेंट में ईज आ जाएगा, ठीक है, मूवमेंट में ईज आ जाएगा, रिदम क्रिएट कर दो, आपके शरीर के अंदर रीजनरेटिव फैक्टर बढ़ जाएगा। जैसे मैंने बताया, रिदम बॉडी का अगर हम क्रिएट कर देंगे तो रीजनरेटिव फैक्टर बढ़ जाते हैं। इसी को कहते हैं, आपकी प्रोटीन क्या है, एक चेन होता है, वो एक रिदम से फॉर्म होता है। आपका शरीर प्रोटीन बनाता है और रिप्लेस करता है। बाहर से प्रोटीन खाओगे तो एलर्जी हो जाएगी प्रोटीन की, आप बीमार हो जाओ, किडनी खराब हो जाएगा, कैंसर तक हो जाएगा। बाहर से हमें प्रोटीन नहीं खाना ज्यादा, आपका शरीर बनाता है, मगर शरीर का रिदम क्रिएट करेंगे तो वो सही तरीके से रिजुवनेटिंग फैक्टर, प्रोटीन एंड न्यूट्रिशन को अपनी जगह पे पहुंचा पाएगा, रीजनरेशन बढ़ेगा आपके शरीर में, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सॉल्व करने की तरफ में तो जाना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट करवा के सॉल्यूशन तब हम देख सकते हैं व्हेन इट इज कंप्लीटली डैमेज्ड। एक्सीडेंट में डैमेज हो गया, उस समय आप करवा लो तो समझ में आता है। ऐसे करवाने पे इसका मतलब हमारे पास इलाज है ही नहीं। अगर हम हर समय रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, हमारे पास ट्रीटमेंट ही नहीं है। किडनी खराब हुआ, किडनी रिप्लेस कर दो, लिवर खराब हुआ, लिवर रिप्लेस कर दो, हार्ट खराब हुआ, हार्ट रिप्लेस कर दो, मतलब आपके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है।
ये तो सोचना पड़ेगा कहीं। Okay, Sushil sir, arrhythmia. Okay, he's just finished. So Mansi ma'am writes, what is the difference between pranayam and kumbhak? I drink water, but after 10-15 minutes, I have to rush to pass urine. Does this mean that my body is unable to retain water? Is this the reason for acidity? दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यही तो मैं बोल रहा हूं। मैं, आप देखिए, आप अपनी समझ से समझो ना। व्हाई यू वांट टू रेफर टू समथिंग एल्स? किसी किताब को पढ़ के क्यों समझने की कोशिश किया? क्या आपके पास फंडामेंटल इंटेलिजेंस नहीं है क्या? तो आपका शरीर होल्ड नहीं कर पा रहा पानी। और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कितने लोगों की इंक्रीज हो रही है? हर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आ रहा है। हीट जब भी आपके बॉडी की बढ़ जाएगी, आपका बॉडी प्यास बढ़ाएगा। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के साइन है। अभी तक तो आपको टैग नहीं किया गया डायबिटिक। किसी डॉक्टर से मिलोगे तो डायबिटिक या थायराइड टैग कर देगा आपको, उसके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है उसका। तो आपका बॉडी होल्ड नहीं कर पा रहा। पहले, बहुत हजारों साल पहले, एक प्रोसेस किया जाता था भारत में, ऐसे कहते थे वारुणी धारणा, यानी कि जल तत्व कैसे आपके शरीर में टिके। तो ये तो आपको करना ही, कुंभक के बगैर नहीं टिक पाएगा। दूसरी बात क्या है, ये प्राणायाम से अलग है, बिल्कुल अलग। हम तो प्राणायाम बोल ही नहीं रहे शब्द। क्यों नहीं बोल रहे? बिकॉज प्राणायाम कम्स फ्रॉम अ योग कलाचार है। प्राणायाम कौन से लीनियज से आ रहा है? यौगिक लीनियज से। यौगिक लीनियज जो है, योगा की फैक्ट्री जो है, उसका एंड प्रोडक्ट क्या है? आप कोई भी योगा की किताब उठा लो, 20 योगा उपनिषद, देयर आर 20 योगा उपनिषद। हाँ, पतंजलि योग सूत्र, घेरन संहिता, हठ योग प्रदीपिका, आप नाम लीजिए, और षड्दर्शन समुच्चय, बहुत सारे यौगिक टेक्स्ट आप उठा लो कोई भी। सोचो, उसमें पढ़ो आप कि योगा के एंड में क्या मिलेगा। तो पतंजलि आजकल बहुत फेमस है, उसकी बात कर लेते हैं। तो कहां से शुरुआत हो? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। क्या मिलेगा आपको? समाधि। आप समाधि लेना है आपको, मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। क्या आपको मोक्ष चाहिए? क्या आपको समाधि चाहिए? आपको मालूम भी नहीं वो क्या होता, आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया कभी, तो मालूम कैसे चले? तो अगर आपके जो प्राणायाम है ना, खास करके योगिक लिनिएज से जो भी आ रहे हैं, वो डिजाइन किए गए हैं मुक्ति की तरफ। उसका कुछ हेल्थ बेनिफिट है जिसको आज कुरेद कुरेद के हम उठा रहे हैं। मगर डू दिस एक्सपेरिमेंट विथ मी। क्या ब्रेथ होल्ड कुंभक बोल रहा हूं मैं? नहीं, रैपिड ब्रीदिंग करो, रैपिड ब्रीदिंग करो। देखो, आप कोई चीज पकड़ के रैपिड ब्रीदिंग करो। आप चलते हैं ना, जमीन को इस्तेमाल करके चलते हैं। स्पेस में चल के दिखाइए आप नहीं चल पाएंगे। हाथ पांव हिला पाएंगे लेकिन, क्योंकि हाथ पांव हिलाने के लिए आपके ही सेंटर ऑफ बॉडी का, सेंटर ऑफ मास का सपोर्ट लेते हो, मगर चल नहीं पाएंगे। तो कोई सपोर्ट के बगैर आप कोई एक्शन कर ही नहीं सकते। तो आप ब्रीदिंग किस बेसिस पे कर रहे हो? कुंभक के बेसिस पे ब्रीदिंग कर रहे हो। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रेथ होल्ड। इवन रैपिड ब्रीदिंग, इफ यू डू, यू टेक सपोर्ट, दैट सपोर्ट इज कुंभक। इफ यू वॉक, हाथ पांव हिलाते हैं ना, तो भी सपोर्ट लेते हैं, बॉडी का, जमीन का, किसी चीज का। तो ये सपोर्ट सिस्टम ही कुंभक है। इज इट डिफरेंट फ्रॉम प्राणायाम? ऑब्वियसली इट इज कंप्लीटली we are, if you, it would have been a प्राणायाम। ये प्राणायाम होता, प्राणायाम क्यों नहीं बोलते इसको? ठीक है ना? तो it's designed for towards health, it's designed towards life, not towards मुक्ति। समाधि की तरफ हमने डिजाइन नहीं किया है इसको, ना ही हम करना चाहते हैं। समाधि की तरफ में ये अलग तरीके से इसको डिजाइन कर सकते हैं, वो अलग है, वो बिल्कुल पक्ष अलग है। अध्यात्म का पक्ष अलग है, योग का पक्ष अलग है। तो ये इट इज डिफरेंट। Okay, I am Jayavanti. I have asked my question about lung scarring, which leads to reduced oxygen absorption. Can Kumbhak help? I also have HBP and acid reflux. So which program would I have to do? अगर आपको कोई चीज एब्जॉर्प्शन फैक्टर बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे? अगर आप स्ट्रॉ से जूस को खींचते हैं तो खींचते किस बेसिस पे? कितना खींच पाएंगे? जितना आपका कुंभक होगा उतना खींच पाएंगे। तो आपका एब्जॉर्प्शन किस बात पर डिपेंड करता है? आपके कुंभक के ऊपर डिपेंड। क्या वीक हो गया? आपका कुंभक वीक हो गया, तो क्या बढ़ाएंगे? आपका कुंभक बढ़ा। आप 6 महीने कर लो इसको, उसके बाद कोई भी स्कैन वगैरह करवा लेना, आपको मैजिकल रिजल्ट मिलेगा। मैजिकल कह रहा हूं, अनबिलीवेबल।
Next. Okay, Sushil sir has a question. Since I have arrhythmia, so can I join the program starting 19th or do I need to enroll in special program? No, arrhythmia. See, we are addressing a different issue at this point of time. Arrhythmia का मतलब क्या होता है? रिदम में नहीं, अभी तो मैंने बताया. हाँ, रिदम, बैलेंस एंड स्ट्रेंथ. रिदम बनाना पड़ेगा तभी अरिथमिया निकलेगा. तो अरिथमिया भी अगर है तो यू ज्वाइन दिस प्रोग्राम. इफ यू हैव अ न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल इशू, ज्वाइन दिस प्रोग्राम. उसी में आपको ये भी एड्रेस हो जाएगा. बट if we see that you need something else also, then we will, after 6 months of practicing this, we'll recommend something else if needed. Otherwise, it can be taken care in this program itself. Indira ma'am says I don't have cartilage in my left knee. Will this program help me? See, if you don't have cartilage in your left knee, cartilage को regrowth करना थोड़ा difficult होता है, and it also depends on age. But one thing, अगर आपका कार्टिलेज नहीं है तो आपका जॉइंट स्ट्रेंथ तो आपको लूज करना जो है वो इस समय क्राइम है. यानी आपको जॉइंट स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़े तो आपकी प्रॉब्लम हैंडल हो जाएगी. वो तो आपको करना पड़ेगा ना. तो व्हाट आर यू डूइंग टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ योर जॉइंट? कार्टिलेज नहीं है, ठीक है, बट स्ट्रेंथ, जॉइंट का मूवमेंट का स्ट्रेंथ, वहां न्यूरो मसल और स्केलेटल जो फॉर्मेशन है उसमें स्ट्रेंथ, वो तो आपको बढ़ाना चाहिए, है ना. कार्टिलेज अगर नहीं भी है तो यू विल नॉट गेट इनटू दैट मच डिफिकल्टी. आप एक्चुअली अपने आप को संभाल तो पाएंगे ठीक से. हाँ, एक नाबा जी हैं, वो बहुत समय से हाथ उठा रहे हैं, उनसे हाँ अनम्यूट कीजिए आप. हेलो सर. नहीं, वो लाल रंग का माइक का जो है वो आप दबाइए तब जाकर. नीचे रेड कलर का जो माइक का सिंबल आ रहा होगा उसको दबाना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट. मतलब आप तब तक अनम्यूट कीजिए, दूसरा क्वेश्चन ले. हाँ रचना जी, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन. Acha, Sunita ma'am writes about I had epidural injection for stenosis, still have back pain and fluctuating BP. स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है? ये अंग्रेजी के वर्ड में पहले अपनी समझ में तो लेके आओ ना. स्टेनोसिस का मतलब होता है हार्ड, स्टोन जैसा हार्ड हो जाना. हार्ड क्यों होगा कोई चीज? हाँ, अभी इसी बात पे बात कर रहे हैं ना हम सारे. दो चीजें, हार्ड क्यों होगा? जब पानी जल तत्व कम हो जाएगा हार्ड हो जाएगा. दूसरा बात, मेटाबॉलिक फैक्टर वीक हो जाएंगे तब भी रीजनरेशन नहीं होगा तो डेड हो जाएगा, तो भी हार्ड हो जाएगा. कोई चीज डेड हो जाएगी तो हार्ड हो जाएगी. अलाइव चीज फ्लेक्सिबल होती है, जिंदा चीज फ्लेक्सिबल होती है, डेड चीज हार्ड हो जाती है. ठीक है ना. तो क्या करना पड़ेगा? स्टेनोसिस के लिए आप इंजेक्शन लोगे तो क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा स्टेनोसिस, थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा. आप वहां पे थोड़ा, आप जिसकी वजह से बॉडी अपने आप को बचाता है, ऐसा भी प्रोसेस है, उसके साइकिल्स को आप काट दोगे तो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल फील हो जाएगा. अगर आपने तो नुकसान करके वो थोड़ा अच्छा फीलिंग लेके आए हो, ठीक तो कर नहीं रहे आप. तो स्टेनोसिस क्या ठीक हो जाता है? तो आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलूँ. यू नो, यू हैव हार्ड सर्फेसेस, रफ एजेस ऑन योर बॉडी. आपके एल्बोज, बटक्स, यहाँ पे रफ एजेस होते हैं ना. और इफ यू हैव एनी हार्ड सरफेस ऑन द बॉडी, डू अ कुंभक प्रोसेस फॉर 3 वीक्स. 3 हफ्ते तक कोई भी कुंभक प्रोसेस पर, यू विल सी दोज विल सॉफ्टन अप. वो सारी चीजें सॉफ्ट हो जाएंगी. हाँ, दैट इज हाउ यू विल सी. इफ यू डू कुंभक फॉर 3 years, 3 साल कर लोगे ना, आप 10 साल जवान लगोगे. 10 साल जवान हो जाएंगे. कैसे जवान हो जाएंगे? आपके मेटाबॉलिक फैक्टर्स इंप्रूव होंगे एंड दूसरा, हार्ड सर्फेसेस आपकी बॉडी में इतनी नहीं आएंगे तो आपका स्किन भी जवान दिखेगा. 10 साल बायोलॉजिकल एज कम हो जाता है 3 साल के कुंभक से. तो क्या स्टेनोसिस को ठीक किया जा सकता है? स्टेनोसिस बहुत आसान है ठीक होना.
मगर अगर ये इसके साथ में एसोसिएटेड चीजें और ज्यादा हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है। केवल टाइम ही का एक फैक्टर है जो कि आपको देखना पड़ेगा। somebody will take 1 month, somebody will take 3 months, somebody will take 1 year, कोई 3 महीने, कोई 1 महीना, कोई 1 साल। पर मैं आपको बोलूं 3 साल में आपका शरीर बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा, मल्टीपल प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, तो मैं क्या खराब डील दे रहा हूं आपको? आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप देख लीजिए। Okay. Jaswinder ma'am wants to know about muscular dystrophy. हाँ जी, आपका अनम्यूट नहीं हुआ, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा तभी हम सुन पाएंगे, अदरवाइज पुट डाउन द क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स में डाल दीजिए। कौन सी प्रॉब्लम बताई थी? Muscular dystrophy. मस्कुलर डिस्ट्रोफी। Jaswinder ma'am. Yes. मस्कुलर डिस्ट्रोफी का मतलब क्या है? मस्कुलर डिस्ट्रोफी का मतलब क्या? डिस्ट्रोफी का मतलब क्या? फंक्शनल डिफिकल्टी, मसल ठीक से काम नहीं कर पा रहे, है ना? तो मसल या कभी कभी उसके ना शेप साइज में सिकुड़न आ जाती है, बदलाव आ जाता है और वो काम नहीं करता। तो काम कैसे करते हैं मसल्स? मसल्स, स्केलेटल सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ये तीनों आपस में मिलकर काम करते हैं। और हम क्या बोल रहे हैं? न्यूरो मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम को हम एड्रेस कर रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये तीनों मिलकर काम करते हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा? एक सीधा पॉइंट रख रहा हूं क्योंकि इसको और भी तरीके से बोला जा सकता है मगर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एक सीधी सीधी बात कि आप इनके काम करने की क्षमता आपके शरीर की बढ़ा दे, तो वो कैसे बढ़ा सकते हैं? तो आप एक काम कीजिए, कोई भारी सामान उठा के देखिए कि आप सामान कैसे उठाते हैं, क्योंकि मसल्स यूज होते हैं। कोई भी भारी सामान उठाने में, कोई भारी काम करने में मसल इस्तेमाल होते हैं। तो मसल इस्तेमाल होते कैसे हैं? कोई भारी सामान उठाते कैसे हो आप देखेंगे आप सांस रोक के उठाते हैं। अगर आप कोई एक लाठी चलाएं या कोई बड़ा सा मुदगर अगर इस्तेमाल करें हिलाने के लिए, या कोई बड़े लकड़ी के टुकड़े को आप हिलाएं, तो भी आप देखेंगे अलग अलग सांस रोक के आप उसको रेगुलेट करते हैं। तो आपके काम करने की क्षमता यानी न्यूरो मस्कुलो स्केलेटल यूजेज कैसे आप इस्तेमाल करते हैं? सांस रोक के। ब्रेथ होल्ड इज द रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर योर न्यूरो मस्कुलो स्केलेटल यूजेज। काम के लिए आप सांस को रोक के उसको एड्रेस करते हैं। तो अगर आप काम नहीं कर पा रहे यानी मसल्स को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो आपकी क्या चीज कम हो गई? आपकी सांस रोकने की क्षमता कम हो गई, रेगुलेटरी मैकेनिज्म वीक हो गए। बढ़ा लीजिए इसे, मस्कुलर डिस्ट्रोफी ठीक हो जाएगी। इतना सिंपल इलाज बता रहा हूं, लेकिन ये आपको समझ में आता है। पर आप अगर सोचें कि अरे मुझे कैसे समझ में आ जाएगा, अरे साहब सबकी इंटेलिजेंस इतनी है कि सबको समझ में आ सकता है। तो सॉल्यूशन उसी से निकलेगा जब आपको समझ में आएगा। जब आपको समझ में नहीं आएगा उससे कभी भी सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। Okay. So anybody from the chat who would, anybody from the participants who would like to ask their question? Jiban Prasad, sir, you can unmute yourself, please. Jiban Prasad. Yes, you're unmuted, sir. Again, you've gone on mute. Okay, in the meanwhile, Sanjeev sir says, can psychiatrist problem get solved with Kumbhak? You cannot treat psychiatric problem different from your physical problem. पहली बात, right? There is nothing called as mind. It's a psychosoma. यानी बॉडी माइंड ये दोनों साथ ही जुड़े हुए हैं। तो पहले प्रॉब्लम आपके माइंड में ही आता है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम ही आती है, बॉडी में तो बाद में आता है। सो एवरी फिजिकल प्रॉब्लम हैज अ साइकेट्रिक प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इट। अच्छा, कुंभक पहले आपका पूरा का पूरा एनर्जी सिस्टम या साइकोलॉजिकल सिस्टम, मन शरीर, हाँ, तो मन शरीर को आपका कुंभक पहले एड्रेस करता है। यानी कि फिजिकल डिफॉर्मिटी हो गई है तो हो सकता है कि वो 100% मतलब डिफॉर्मिटी करेक्ट ना हो,
प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी 100%, डिफॉर्मिटी करेक्ट ना हो, मगर मेंटल तो 100% करेक्ट होगा। साइकेट्रिक प्रॉब्लम तो 100% करेक्ट होगी, उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि देयर इज नो फिजिकलिटी एसोसिएटेड विद इट। फिजिकलिटी अगर एसोसिएटेड है तो फिजिकल डैमेज बियॉन्ड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, बियॉन्ड अ सर्टेन रेंज, उसको आप दोबारा से बिल्कुल वैसा नहीं कर सकते जैसे जवानी में। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी, मगर शायद फिजिकलिटी देखने में वो इतना सॉल्व नहीं दिखेगा। मगर मेंटल इश्यू, साइकेट्रिक इश्यू तो 100% ठीक होगा, 100%। बिना उसके ठीक ही हुए तो फिजिकल प्रॉब्लम ठीक होगी नहीं आप। नाउ वी हैव अ डिफरेंट वे टू एक्चुअली सी अ साइकेट्रिक प्रॉब्लम। हमारे पास में एक अलग तरीका है उसको अप्रोच करने का, या उसको हम अलग तरीके से देखते भी हैं, मगर किसी भी तरीके से देखें उसको, उसके लिए हम वी आर क्रिएटिंग अ नॉलेज बेस। आप ऑनलाइन जाके वो सारी चीजें पढ़ सकते हैं। साइकेट्रिक प्रॉब्लम को बहुत कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी सिंपल कॉल्ड स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, उससे लेके बाइपोलैरिटी, स्किज़ोफ्रेनिया एंड व्हाट नॉट, इवन पार्किंसन और डिमेंशिया, ये भी उसी कैटेगरी में कहीं ना कहीं आते हैं। तो आप कुंभक अगर अष्टांग चिकित्सा में एनरोल करेंगे तो आप देखेंगे एक चीज जो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी समझ बढ़ जाती है, आपका आईक्यू बढ़ जाएगा, आपका मेमोरी पावर बढ़ जाएगा, समझने की क्षमता बढ़ जाएगी, मेमोरी बढ़ जाएगा, आपका मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये चीज तो होगा ही होगा। देयर इज नो ऑप्शन, हेल्थ कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट करेक्टिंग द माइंड। तो ये तो वहां से शुरुआत होगी। Okay. Sanjeev sir, if you want to ask, you can unmute yourself, please. I have unmuted everybody. Okay, Malika ma'am writes, I am suffering from rheumatic arthritis from last 15 years due to increase in ESR. Can it be permanently cured? As all doctors say that it's an autoimmune disease and it stays for a lifetime. Is this true? No, that is not true. From our side, from their side it is true. उनकी तरफ से ये सच है, मगर you need to complete the statement. उनकी तरफ से जो बोल रहे हैं कि वो लाइफ टाइम ठीक नहीं हो सकता, मगर वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट आपको भरना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी ट्रीटेड विथ मेडिसिन, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड विथ केमिकल मेडिसिन। ठीक है ना? अब आप इसको ठीक से पढ़िए। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कैन नॉट बी ट्रीटेड विथ मेडिसिन। क्या ये बात सच है? 100% सच है। तो आपका डॉक्टर सच बोल रहा है, बिल्कुल 100% सच बोल रहा है, पर उसने फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया है। और हम क्या बोल रहे हैं? autoimmune disorder can 100% be correct. अब आपके पास दो चॉइस है, आप किसकी बात मानना चाहते हैं? ठीक है ना? ये चॉइस हम आपको देते हैं। आप ठीक होना चाहते नहीं होना चाहते, कम से कम ये फ्रीडम तो आपकी होनी चाहिए ना। ये फ्रीडम तो होनी चाहिए ना, मुझे ठीक होना है कि नहीं होना। मुझे ठीक नहीं होना है तो आई विल गो टू सम पर्सन हु विल नॉट करेक्ट मी। मुझे ठीक होना है तो आई विल गो टू सम पर्सन हु विल करेक्ट मी। तो ये आपकी चॉइस है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बहुत आसानी से ठीक होता है और ये हमेशा फ्लक्चुएटिंग होता है। अगर आपके शायद लाइफ में रिस्क ज्यादा है तो ऑटोइम्यून बढ़ जाता है, नहीं खत्म कर दो ऑटोइम्यून ठीक हो जाए। ये सुबह ठीक है, शाम को बढ़ सकता है, ऐसा भी है। तो ये बहुत आसानी से ठीक होता है। पहली बात, मुश्किल नहीं है ठीक होना इसका। इसको अप्रोच अलग तरीके से करना पड़ेगा, समझना भी अलग तरीके से पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप एक ही चीज एक ही तरीके से सोचेंगे तो ये इंटेलिजेंस नहीं कह रहा था। तो एलोपैथी एक ही तरीके से चीजों को देख रहा है और दैट इज व्हाई 70% से ज्यादा प्रॉब्लम एलोपैथी ठीक ही नहीं कर पाता। सो दे हैव लिमिटेशन इन द वे दे अप्रोच डिजीज एंड डिफिकल्टीज। अभी इसके बहुत काम होना है दूसरे पक्ष में। इन्होंने तो छोड़ा ही नहीं कोई दूसरा अल्टरनेटिव। Swami ji, can I speak? आप बोलिए। Swami ji, I have one question. can I speak? Yeah, please. Swami जी बोलिए। My mother is suffering from sleep disc since last 5 years. She is 73 years old, and MRI reveals extrusion of right paracentral component at L5S1.
So And this is an F4 observation. This is an observation. MRI F4 MRI is an observation. ठीक है, वो we don't need that because even if they do an observation, they can't correct it. MRI So can ने it be आज तक हाँ MRI ने आज तक किसी को ठीक किया है क्या? कोई नहीं। MRI करा के ठीक हो गया? नहीं हुआ ना. तो इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन. आप आंखों से नहीं देख पा रहे, किसी और तरीके से देखने की कोशिश करो, बट यू डोंट हैव अ सॉल्यूशन. वो आपको Yes. सर्जरी के लिए बोलेंगे. They will Yes, only sir. talk about surgery. Yes. So you can always take a chance. It can be corrected without surgery also. But Okay. we give a method in the program where two people, with the support of two people, if somebody has slip disc, if they do a particular process, the chances of the slip disc coming back and becoming fine Yes. increases a lot. बहुत ज्यादा हो जाता है उसका, and then it has to be supported with increased metabolic factor in the body और strength. देखो एक चीज है जो कि आपके स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, दिस एग्जांपल आई गिव इन एवरी वेबिनार. यू टेक फ्लैट स्टोन, पत्थर होते हैं ना, चपटे पत्थर होते हैं, फ्लैट स्टोन्स. ड्रिल अ होल इन दैट फ्लैट स्टोन, 33 स्टोन्स. ड्रिल अ होल एंड पुट अ रोप, एक रस्सी डाल दो उसके अंदर और खींच दो. ऑल द स्टोन्स विल गेट अलाइंड. वो सारे स्टोन्स अलाइन हो जाएंगे. द मोमेंट यू पुल द थ्रेड, all the stones will be, they will fall in a line. But if the pulling strength or the stretch tension is not proper, they will slip. तो slip disc क्यों होता है? The pulling tension of the spine is weak. ये कम हो गया, जिसकी वजह से slip disc हो रहा है. This is called as व्यान. This is called as व्यान बल. इसको क्या कहते हैं? व्यान बल. So when we teach processes, उसमें थर्ड प्रोसेस है कुंभक थेरेपी. अंगन्यास, हठ विन्यास, कुंभक थेरेपी. In कुंभक थेरेपी again there are three things. The third one is called as व्यान क्रिया कुंभक. तो आपका स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी का जो फोर्स है उसको तो हम बढ़ा ही रहे हैं. And if there is a disalignment, we give a special process जिससे कि वो स्पाइन को थोड़ा वो खिंचाव मिलते ही स्लिप डिस्क ठीक हो सकता है. ठीक है ना. तो वी गिव दैट. हाँ, बहुत ही ज्यादा अगर इश्यू कहीं पे आ गया है, द पर्सन कैन नॉट बेयर द पेन और नोबडी कैन वर्क अपॉन, जब कोई काम ही नहीं कर पाएगा उसके ऊपर या वो खुद नहीं काम कर पाएंगे, देन देयर इज ओनली वन थिंग, सर्जरी लेफ्ट एज एन ऑप्शन. तब it's सर्जरी painful. एक्चुअली But she can walk. हाँ, तो slowly. फिर you always give a time period or a chance to the body to correct it, but you align the body. फिर देखो ये अपने आप ही, ज्यादातर केसेस में अपने आप ही ठीक करते हैं. Okay. सर्जरी विल नॉट बी रिक्वायर्ड. Okay. सर मेरा बोलिए, सिक्योर का साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, 20 साल से दवा खा रहे हैं, डिप्रेशन चलता रहता है, वो क्या क्योर हो सकता है? 100 अभी तो बताया, 100%. साइकेट्रिक प्रॉब्लम तो 100% क्योर होता है, 100%. लेकिन उनके साथ में प्रॉब्लम ये होता है, मैं बता देता हूं आपको, किसी ना किसी को उनको हेल्प करना पड़ेगा. शुरुआत में उनको बोलोगे तो नहीं करेंगे, तो कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, ऐसे चलेगा. तो इट विल टेक अ लिटिल टाइम. उसके ऊपर आप किसी को एक थोड़ा फोकस्ड काम करेंगे, उनसे ये चीजें करवाएंगे ना, तो यू विल सी 100% निकलना. और सर जो 2 कोर्स बताए थे, षडांग प्रतिष्ठा और अष्टांग चिकित्सा, दोनों अलग है क्या? ये दोनों अलग चीज है. ये दोनों अलग चीजें हैं. वो लंग की तरफ में डायरेक्टेड, अस्थमा, एलर्जीज, लंग इश्यूज की तरफ में डायरेक्टेड है. ये जो है न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम की तरफ में डायरेक्टेड है. वो कौन सा कोर्स में आएगा साइकेट्रिक प्रॉब्लम? साइकेट्रिक प्रॉब्लम तो दोनों में ही ठीक होगा. साइकेट्रिक प्रॉब्लम दोनों से ठीक हो जाएगा. लेकिन अगर मैं एक चीज बताऊं कि जब लंग का इश्यू होता है ना, तो उसमें हम यूजुअली बॉडी के हीट को इंक्रीज करते हैं. ठीक है ना. इसमें हम बॉडी के हीट को इंक्रीज नहीं करते न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम में. तो इसका जो कुंभक थेरेपी है ना, वो बिल्कुल ही अलग है. आप चाहें तो यहां पे ला सकते हैं, बट इसके अंदर बॉडी मूवमेंट है. तो अगर वो आपकी सिस्टर बॉडी मूवमेंट के लिए आप करवा सकें उसको, तो उसको बहुत जल्दी फायदा होगा. क्योंकि साइकेट्रिक वाले ना जल्दी ये करना नहीं चाहते. अगर करेंगे तो वो बिल्कुल निकल जाएंगे. तो अष्टांग चिकित्सा एक
अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, क्योंकि उससे उनकी फिजिकलिटी को बहुत हेल्प मिलेगा। तो फिजिकलिटी को हेल्प जहां तक मिलता है ना, तो उनके माइंड को इमीडिएटली इंपैक्ट करता है। तो अगर आप थोड़ा देख लो, अष्टांग चिकित्सा में षडांग प्रतिष्ठा क्या है? फ्लेक्सिबल प्रोग्राम, मगर वो डायरेक्टेड कहां है? वो एस्थमा, एलर्जीज, इनकी तरफ में डायरेक्टेड है। वो भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम को डील करेगा। वो थोड़ा फ्लेक्सिबल है, जल्दी खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा इलैबोरेट प्रोग्राम, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमने छोड़ा है। सब कुछ इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूडेड है। किसी भी तरीके की थेरेपी देखो, मैं बता दूंगा यहाँ पे ये थेरेपी यही काम करती है, मगर इसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है, यानी बॉडी का मूवमेंट है। अच्छा रहेगा अगर करवा सकें तो अष्टांग चिकित्सा करवाएं। अगर आपको लगता है कि वो इस लायक है नहीं कि वो ज्यादा ये ऐसा कुछ कर पाएगी, बॉडी मूवमेंट कर पाएगी, तो आप षडांग प्रतिष्ठा पे जा सकते हैं। ठीक है सर। सर हम नॉर्मल आदमी के लिए कौन सा कर सकते हैं? हम लोग नॉर्मल जो पीपल है, कुछ ऐसे मेजर इश्यू नहीं है, हम लोग कौन सा जा सकते हैं? नॉर्मल, देखिए नॉर्मल के लिए ही जरूरी है कि वो कुछ ना कुछ करें अपने हेल्थ को बना के रखने के लिए। हाँ, बना के रखने नॉर्मल आदमी, नॉर्मल ये दोनों ही नहीं है सब वजह। हाँ, इशू नहीं है ना, तो आप अपने फिजिकलिटी, आपको फायदा कब होगा? जब आपकी फिजिकलिटी में कोई चेंज आपको लगता है। आपका शरीर के साथ में अगर मूवमेंट कुछ लगता है, उसमें चेंज लगता है, तो आपको इमीडिएटली फायदा भी दिखाई दे, है ना। लेकिन अगर आपकी एबिलिटी नहीं है कुछ करने की, सपोज कीजिए कि कोरोना के बाद में आपको डिफिकल्टी आ, सांस लेने में थोड़ी सांस चढ़ती है, थोड़ा थकान महसूस करते हैं, अगर ऐसा है तो फिर आप षडांग चूज कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी फील नहीं करते और हेल्दी रहना है, तो ये कंप्लीट प्रोग्राम है, अष्टांग चिकित्सा में आ जाइए। मैं तो सर षडांग प्रतिष्ठा में ज्वाइन किया, एडमिट हुआ है कल सुन के। अगर कर लिया तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? किया नहीं, मैं कल एडमिट किया, कल एनरोल किया है, कल से तो शुरू होगा ना। हाँ, कल शुरू होगा तो फिर आप वो कर लेते। आज तो ये इसका प्रोग्राम बारे में आज मैं सुन रहा हूँ वेबिनार में, तो वो कर लीजिए पहले। उसमें ही आपका प्रॉब्लम भी, अगर प्रॉब्लम भी है तो भी एड्रेस कर देंगे, नहीं भी है तो भी वो इम्यूनिटी बिल्ड करने का एक बहुत अच्छा मॉड्यूल है। Indira ma'am writes, can a person with liver cirrhosis benefit from this program? हाँ, स्कारिंग ऑफ लिवर सिरोसिस ये इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों इंक्रीज हो रहे हैं? एक तो मैंने बताया कि बॉडी इज नॉट एबल टू होल्ड वाटर। द सेकंड थिंग इज द रिस्क फैक्टर, डीजेनरेटिव फैक्टर्स हैव बीन इंक्रीज। आपके बॉडी में रिस्क बढ़ा दिया गया है। तो तीसरा, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी इज वीक, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ वीक है। तो क्या लिवर सिरोसिस हम ठीक कर सकते हैं? लिवर सिरोसिस बिल्कुल, लिवर सबसे जल्दी रिकवर होता है, लेकिन वो जल्दी खराब नहीं होता, ये प्रॉब्लम है उसके साथ। 95% of a liver damage, till 95%, liver will not give indication, liver indication ही नहीं देगा। तो अगर आप सिचुएशन को सही कर देंगे तो लिवर सिरोसिस आराम से ठीक हो जाएगा, है ना। पर ये फैक्टर एड्रेस करना पड़ेगा। आप दवाई खा के नहीं ठीक कर सकते, समझे ना, आप दवाई खा के नहीं ठीक कर सकते। सो विल एंड विद दिस क्वेश्चन, है ना। आप लोग कोई और सवाल अगर बचा है, देयर इज एनी क्वेश्चन लेफ्ट, यू कैन पुट डाउन इन द ग्रुप, यू आर अ पार्ट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप, यू आर अ पार्ट ऑफ, वहां पे डाल सकते हैं, इट विल बी आंसर्ड, उसको आंसर किया जाएगा। बट अब डिसीजन लेने की बारी आपकी है। यू विल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। अगर कल को कोई तकलीफ आती है, डिस्पाइट ऑफ ऑल योर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन एंड ऑल द मेडिसिन, बचपन से लेके आप मान रहे हैं ना WHO की बात, सरकार की बात, डॉक्टर्स की बात, साइंटिस्टों की बात आप मान रहे हैं, आपकी लाइफ तो अच्छी नहीं हुई साहब। और कल को आपको कुछ नुकसान होगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा, ये भी बता दीजिए। लिवर सिरोसिस हो गया, आपको डॉक्टर बोलेंगे लिवर ट्रांसप्लांट कराओ, बड़ा मुश्किल है, आप जायदाद बेच के लिवर ट्रांसप्लांट कराओ, अगले दिन खत्म हो जाओगे। विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? नोबडी। आपका डॉक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है आपकी हेल्थ के लिए? बिल्कुल भी नहीं लेता। आपकी सरकार लेती है, सरकार के पास मजबूरी है, उसको जो ज्यादातर चीजें कही जाती है वही मानना पड़ता। WHO लेगा आपकी जिम्मेदारी,
अमेरिका लेगा आपकी जिम्मेदारी? अमेरिका को पैसा दे रहे हैं कि नहीं? हर एक लोग दे रहे हैं ना, दवाई खाते हो ना, उसका पैसा कहाँ जाता है? अमेरिका आर्म्स बनाता है, हथियार बनाता है, तो आप उसको हथियार बनाने के लिए पैसा दे रहे हो, रोज देते हो, लेकिन वो जिम्मेदारी लेगा आपकी? नहीं लेगा, 100% नहीं लेगा, बिल्कुल भी नहीं लेगा। बॉम्ब जरूर कर देगा आके आपको, बीमार हो जाओगे तो, ठीक है ना? तो जिम्मेदारी कौन लेगा आपके सिर? आप लोगे और कोई नहीं लेगा। तो आप जिम्मेदारी लीजिए, आप अपनी समझ से प्रॉब्लम्स को समझिए, फिर देखिए कि आपको क्या करना चाहिए। सो आर वी स्टॉपिंग यू टू गो एनीवेयर एंड डू नथिंग? सर्जरी नहीं कराओ, दवाई मत खाओ, हम रोक रहे हैं? हम रोक नहीं पाएंगे आपको, साफ बता रहे हैं। आपको डरा के करवा दिया जाएगा। कोरोना का वैक्सीन लिया कि नहीं लिया? लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको निकलने नहीं देंगे घर से। तो क्या हम रोक सकते हैं? अभी अभी नहीं रोक सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? हम बचा सकते हैं आपको, ये गारंटी हम ले लेते हैं। डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स यू कैन सेव योरसेल्फ, बट यू विल ओनली सेव योरसेल्फ बाय एम्पावरिंग योर बॉडी, नोबडी एल्स। अमेरिका को एम्पावर करके आपका फायदा कुछ भी नहीं होने वाला, बट इफ यू एम्पावर योर बॉडी, दिस बॉडी इज मैजिक, इट विल क्रिएट हेल्थ फॉर यू, इट विल क्रिएट ब्यूटीफुल लाइफ। इसकी मदद कीजिए, ये कंपलसरी, हेल्थ कंपलसरी कर लो, बाकी चीज ऑप्शनल। अपने ऊपर काम करना कंपलसरी कर दो, बाकी चीज ऑप्शनल। यू विल सी योर लाइफ विल इंप्रूव, योर लाइफ विल इंप्रूव फॉर गुड, इट विल ट्रांसफॉर्म मैजिकली। तो ये जिम्मेदारी हम सबको लेना है, अपने लिए ही नहीं, हमारे आगे आने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि वो हमसे भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। हमारी हालत ये हो रही है ना, हमारे पिता लोगों की हालत, दादा लोगों की हालत ऐसी नहीं, हमारी हालत खराब है, हमारे बच्चों की हालत और भी खराब हो जाए। तो वी हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। विद दैट आपको आगे के लिए, एक तो वेबिनार में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे के जीवन के लिए खूब खूब शुभकामनाएं। Thank you so much, Swamiji. And thank you to all the participants for attending the webinar. Stay well, stay happy, and good night. Whatever questions have not been answered, you can please write in the chat box.